Well, ladies and gentlemen, and my dear gamers, and yes, we are back with another banger, Scrims. And we will straight up will be going into the drafting phase. I, Solski, will be your caster for this match number one best of three series, which is going to be held between Team Dreambreakers versus Team LOS, that is Lost Surrealists. I mean, that's, a very, I would say, so, oratic, not oratic, but aura name. And yes, by my side is none other than it is going to be Miss Asuya. So how are you, Asuya? How have you been? I'm good, Soul, and I hope you're good too, and everyone else who joins us every day daily whenever we have these scrims. And today too, it is a best of three, and just like you can see, both the teams, at least for me, both these teams are relatively new. So let's see what they have to offer because the ban phase, like it's kind of similar. All meta bans just coming up. Hirara being grabbed on as the first pick. Well, pretty good. Let's see if Bharat will be coming up because I think Bharat is kind of a good counter against the Hirara. Though they do have a lot of other options open too. What do you think, Sol? You can just pick jungle onto the third pick, Lost Surrealists. And now they have the opportunity to pick out some mages. That is going to be oh yeah, Valiant Zoshin, workable enough, and a Kaja. Holy, we are gonna see a new Kaja onto the board. That's I would say it's going to be not annoying to face against Kaja, but I would love to see how his divine judgment now you know does work, because I know that you can immune inside that area, but you can't go outside the area where Kaja use his divine judgment. But Dreambreakers has responded with that Alice to go for the disruption whenever Kaja gives a set, and a Claude to follow it up with that dive. So overall, I would say a good picks coming in from Dreambreakers. Oh, Uranus against an Alice. It's just a sustained matchup, but Alice does give you more, I would say, dividends in terms of crowd control. So I think first part of the draft, Team Dreambreakers has won, in my opinion. Well, definitely the draft looks really strong. They already have even a melter. So I think Team Dream Breakers, I don't know if they will ban away the carry or the Moscow because that's the only, like at this point they can't even pick up a Lunox. So I think only the carry or the Moscow can, be a problem for them. But yes, Melissa can also come up. But then again, I'm not a big Yes. fan of Melissa right now because I don't know because Claude can just counter her out. Let's see though, Claude being banned away, and just like you said, Alice offers more when it comes to giving a bit of a crowd control. But then again, in the early game, she's kind of weak. I mean, not that sustainable. At that point, Uranus will be doing a bit more damage. So I think very strong early, a bit more stronger early coming from the side of Team Lost Cereals. And look at them, just banning away the carry. Carry ban, a Grok ban, Kalea and a Carmilla ban. Don't want to give away the Carmilla. Understandable, too much of, I would say, combo wombo. But why Carmilla? I'm still not a big fan of Kalea ban as well, because she hasn't been into the meta quite for long, because she's just too, I would say, not even the meta, but she's just too situational. And in this draft, Kalea wouldn't have been a good pick for Team Dreambreakers. You could have banned out either, I would say, Brody. No, not Brody. Oh, yeah, Valentine or Atlas, but they have given away the Valentine or the Atlas. Atlas ban could have been a little bit better, because you have already Rome, and Atlas is one of the tanks that just gives Kaja the hard time. But this is a new Kaja that can fly away, and he can just fly away from the perfect catch or maybe the fatal links as well. But still, the surprise element is still with this both of these roamers. But yeah, Atlas gives you more, I would say, space to get dash out damage, to zone out the enemy, especially the passive. It is very annoying. And to melt down that hero, you need a lot of firepower. Talking about firepower, they have opted out for YSS Jungle against Terrara. Two late game focused Team Lost Cereals will be online into the meta game, and Dreambreakers, they will be online from the starting of the game, just to have that potentiality, in my opinion, because Lost Cereals have the early game as well, but with only Zushin and this Uranus. So it's kind of dicey for Team Lost Cereals in early game.
Well, definitely. They do want the Vices to. I mean, I don't know if he will go in for the Sky Piercer, but really He needs to should. funnel that up. And also, yep, he should, especially because there is an Alice and there's an Atlas. I mean, he does have the immunity to move away from the Atlas, but then again, Team Breakers, they will have Kaja's ult because they just picked up the Valentina. So I was just wondering that why not just go in for the Valentina ban at least because she can steal it away from the Kaja. And Hmm. I think, well, it is what it is. Just like you said, dude, especially the Kalia ban does not really make sense to me, but here we are into the land of Dawn, and let's see how this best of three goes. As for now, I think in the EXP lane it will be the Uranus who can do a bit more damage, a bit more poke. Same goes in the core lane, we will have the Claude having the upper hand, because Moscow really needs that Trinity, or maybe at least two equipments before he can start shining a bit. And of course, let's see if Team Dean Breakers go in for some invades and all, because they definitely do have the early game, which is really strong. Yes, and that's a soaring wings for this Kaja. And now, as you mentioned, Well, Valentina can give out, can take out that divine. Instead of divine judgment, now it is divine binding. So yeah, my bad, gang. So for now, Dream Breakers, have that early game. But I know Sureales, they need to play around that Uranus and Zushin. And the good thing about Lost Serials is they have the vision from the Haunting Shocker, so that will very come in handy to play it safe into the early game. And this, look at no? that, the constant early invade Hirara might have the openness that she might be looking for to gang into the top lane. However, Max getting his hands onto blue buff on the top lane side. There is Myson A might go for a dual fan combo. I don't think so, and we'll have to back for now. Kira is just so strong, she can even give a gank at level 2 and he will be finished. I think something like a Suyo. But Kaja, being a bit more overconfident, does have the first kill and manages to dash away. And with this, still the flicker is saved up. He did not use that flicker. Ah well, still makes sense because he'll be coming back really soon and it will be the turtle. But with this, already a really good start for the side of Team Breakers. Well, let's look at the Atlas going in. The frozen, the passive, the stun all connects up onto Max. And with this 4 members dives in from behind, pretty good follow-up, pretty good synergy. What will Viasis do with his early game damage without the level 4 of this Kaja or maybe anybody else? But look at that. Oh, No, a divine binding from this Valentina. Get the ultimate of the Kaja. And now I think Valentina, as you mentioned, Asuya, is going to be one heck of an annoying hero to face against, especially when she takes away the divine binding. Meanwhile, you can say again, Max getting decimated. This is the early game I was talking about. It's just too much to handle. You need that constant pressure Uranus from the Uranus that you need, especially with the Zushin as well, but that's not it because it's a lot of damage. Okay, divine minding, that's a flicker as well to Hirara, and that's a good play coming in from the Kaja. That's a SOD that connects on the two people, and that might go in again. No, that's a BMI towards the red buff side from the Cloud, but nobody holds there. it's really funny that Moscow used his SOD, manages to last hit that orange buff. So that was kind of really funny. And yeah, with this, at least they have at least one buff, I would say. But then again, 3 minutes into the game, look at the aggressiveness which is coming in from the side of Team Dream Breakers. And if you can see the equipment, I'm sure that, Hirara will be going in for the Sky Piercer because she's already performing really well. 2 kills already onto her hand. Yes, and for now, okay, never mind. Again, divine binding has been towards this Valentina, and this is what gives a very hard time for to play Kaja against. And I mean, Dream Breakers, they just need to wait it out. They are playing it perfectly right. Meanwhile, Lost Cereals need to wait out for the power spike. Need to see some itemization. That's our DHS in just 4 minutes mark from that Claude. And meanwhile, Moscow just bought some crossbow. We can see in the top lane that's going to be another Fatal Links, Divine Binding as well, getting I think 3 people on the Divine Binding. And no, this time not enough damage to execute anybody of them, but that's a good Crimson Beacon from the Zushin, and that will be the blazing duet with the BMI. But the Claw have to fall back for now. Too many people are low, but a good knockup coming in from Zushin, and this is what I was talking about. Early game, you need that Zushin, and now Team Lost here is making a slow comeback in this game.
Yeah, pretty good team fight. I would say both the teams are pretty good when it comes to the synergies. Especially, I think the Moscow is playing it really well because he knows when to connect his SOTs, he knows when to dive in into the team fights. Even though there is an Atlas, even though there is also Valentina 2 crowd control, but with that, the passive being locked down onto the Kaja. Kaja is suffering a lot in this game for now, but it is what it is. He'll be fleeing back safely and soon he'll be tanky enough too because at the end of the day, he's not tanky enough at this point. And with this, nothing much, even though there was a lot of skirmishes happening, yet not even a single macro. All the turrets are intact. And the kill lead, the goal difference isn't, it's just around 800 difference. So it doesn't really matter, just one or two pickups away. I really love how this Kaja is constantly poking around, giving a lot of visions, considering that he can fly over walls at now. So yep, makes it pretty good for him, but Freeman connects the stun onto the Uranus. Needs to back off for now. He is tanky enough. And with this, the next objective will be coming up pretty soon. Unless and until. Let's see if Yosha will be getting caught off guard with that Kaja. This is how the dash and the Divine Binding and the 3-man sandwich along with the SOD gets pushed back and Yosha will be taken down. Pretty good gang coming up. Superb. That was superb execution coming in from not Dreambreakers, but Lost Sureales. Right now, Snow going in with a perfect catch. Nobody hurts there. And now, Moscow onto the top lane side. YSS with a good rotation onto the bot lane. Mounting Choker giving to that Hirara. And now, they're looking for some other targets. This guy, Kaja, is lowering their defenses as well as their attack speed by that, the passive, the paralysis kind of thing. But I would like to see some itemization because Moscow was behind. I might now think that he might be ahead. Then that's from the Claude 4-4. Oh, no, mind, he's 400 gold behind. But he opted out for the Golden Star. Okay, I think he's playing the long game. He needs the dashes, I would say, very frequently. Rather than going for corrosion, he has opted out for that, the golden stuff. And I think now he will go for DHs rather than going for the corrosion this time. The turtle is up. Third turtle of the game. And with that, we can already see a lot of skirmishes happening, and it just more. Look at that beautiful 2-4-man set along with the Fatal Links, and Bronzo will be getting taken down. And next is Reza as he literally falls down. Yosha takes down Zushin, and with this, 4 members down already. Meanwhile, Moscow, unfortunately, will just be split pushing for now. He does have the SOD to connect and save himself, but I don't think so that Team Dreambreakers will be giving him the opportunity to push this turret away. Will he? He should just go back because Alice is coming up. At the, he's just Alice, so she has used her ultimate now. I think he will be going to the harm's way. Meanwhile, they will get the mid lane, but now they will focusing on to the bottom lane side. But there is the Kaja going into the buff, just trying to protect his buff. And right now, I think, Dreambreakers, that was such a good combo on both. Horn of Ruin, Fatal Links, and the Valentina with the IMU Divine Binding. Just immaculate. But you know what? I think Team Lost Sureales, that was such a I would say, whatever mind you can see there is. Fatal Links connect onto nobody, and I think they should capitalize onto that mistake. That's a Divine Binding, but nobody is there to follow up their resolution with that. Never mind, Maui an E from that Hirara, but nobody holds there. Not enough damage to execute the crossbow. Now the Blazing Duet from the Yusha, but I think that is not a good Blazing Duet again. This Myson E. Oh, Hirara, but that's a very good Thorn of Ruin coming in, and this Valentina with a Divine Binding as well. And now they're looking for this Uranus because he will be next onto the chopping blocks. Meanwhile, you can see top lane, trade-off coming in from YSS. I really love at least one person trades off on the opposite side of the map. At least, even though they're lagging on the kills and a bit far behind on the goal, but then they still have the control of the macro, right? They managed to take away 2 turrets from both the sides, but then the mid-tier second might fall. Yes, it will be falling, and Moscow and the rest of the team is back, but then they won't be able to save that second. And I think the mid lane is the most important because it's completely opened up the map for them now. And YSS, who really needs a bit of more farm, I don't think so he will be getting his buffs so easily at this point. But with this, a lot of recalls happening. Kaja did not cancel, he did not even use his first skill set. And unfortunate for the Claude, will be going in for the top as the second tier was also pushed by the minions. However, this Team Dreambreaker is going in, opting in for the Lord. Will Team Lost Sureales follow up the Kaja, or they are giving it away for free?
But then even if they dive in, there's so much crowd control in the hands of Team Dream Breakers that you really need to be careful with the positioning. With this, the SOD kind of wasted Atlas using up the passive onto the cards, and the Divine Brigade hasn't been used yet. But with this, just look at the Crimson Beak and a few knockups coming up left and right, and with this, double damage onto the Vices trying to take down the Atlas, but manages to move away. Meanwhile, Valentina falls in that exchange. Kind of over-aggress. Should have waited for the Lord, right? Good trade-off in my opinion for the side of Team Lost Sureales. Now they can defend a lot because there is no Thorn of Ruin, there is no Fatal Links, and there is no Valentina. So no Divine Binding as well. That will be free Lord defense, but I think they will get a top lane structure. And again, I would like to see some itemization because I don't think so there is going to be a lot of fight. Instead, they tried, they are going in at the perfect cast, just trying to, get that holy shield of the tier 1. Base structure, base turret structure, base turrets. That's just, they will get the holy shield and one Lord strike onto that middle base turret. And now we can see that there is, instead of going for Malefic Gun, they have opted out for that, Winchan, this Lord, and so far Moscow is Lord behind, but he is completing his Trinity now. If he completes his Trinity, I think he will be good to go. Okay, never mind. You can see there is Bison E, dual fans as well. Might go for the Divine Binding. Snow going in. Reza caught off guard right there, and that is a Thorn of Ruin as well there, Suya. Two Divine Judgments just cancelling away each other. I think very good play coming in from the Valentina because there was a good 4-man set coming in from the Kaja, but then he couldn't pull out anyone because Valentina pulled him back. So with this, we have 3 members already falling off, and the Uranus as well as the Moscow still surviving, but it will be enough. I don't think so, as both of them just fall off, and minions are just on the base. Some recall it on. I think pretty easy aggressive win, really good synergy coming in from side of Team Dream Breakers, winning them the victory for the first match. Yeah, because they know what the win condition was. Dream Breakers absolutely playing well, but Lost Sureales is kind of lost on their win conditions and how should they play, how they should play a certain game, how long should they wait in a game to get a power spike. But we can see the replay. There is a Divine Judgment, that is the Beyblade battle right there, but there is a good BMI and that blazing to just zone out the enemy. Zushin falls down from the Yusha absolutely playing well, holding on to that, that blazing to it onto the nick of time, and then using it just to kill at least one people from Team Lost Sureales. It's just so goated play coming in from that Claude. Meanwhile, we can see Moscow tried his best, but it doesn't have the Trinity, so it doesn't have the damage. This was it for the game number 1 of the match, first of the evening. We'll go to the game number 2 for the drafting. And you know what, Team Lost Sureales, if they had a fighter gold, I think this draft would have been such a good counter for that draft coming in from the side of Team Dream Breakers. But they opted out for the Moscow, as well as this bias is just too much scaling onto their draft. Kind of lost in the draft, in my opinion. Yeah, I completely agree because with the Hirara itself, you should know that the early will be really aggressive. And there's even an Atlas. They already had 2 cards open. I think one Atlas in the early followed up by that level 2 Hirara can literally delete one person in the early. So they should have, thought about that, maybe countered it around. Because even if you're planning to take up the Moscow, which of course makes sense, because he is good in any situation anyway, if he's able to get his farm up. But then towards the EXP, like I said before, could have gone in for the Barats, at least could have logged in someone. And if you're going in for the Kaja, run away the Valentina, man. Just like in that last team fight, we saw it again, that how Kaja was trying to drag people away, but then he was the one getting dragged away instead by the Valentina. So and with this, there was so much goal lead and so much space for the Claude to play that at that point, one good blazing void was literally hurting and deleting everyone into the back lines. Yeah, and you know what? I think, as you mentioned, the Valentina, but I think Moscow, as you mentioned, it is good in every situation. But you know what? The early game part, I think, if they opted out for some fighter gold, just like some Ruby or maybe some that could have made possible for them to play that early game thing, because they already have the YSS for the late game.
And even the fighter gold right nowadays, like the Soras, or maybe not the Sora, but the Ruby. If only if But Hirara, which we know that Hirara was overestimated, quite a few times. But when if Hirara decides to over engage, that's when Ruby comes in with the Eye of Infinite. I think that will be the win for team, Los Sureales. But because of the Moscow, there was just too much scaling. I think, Ruby was good into the core, but after they reworked how her lifesteal and spellvamp works, like her damage increased, but then she's no longer kind of viable into the core lane. So I I mean, think, Ruby, Sora, whatever works in that, in the yes, I draft. think, yeah, I think even the Freya, but I think they needed a bit more of a crowd control. There was only the Kaja, and when like there is a tank, a setter tank, something like a Tigreal or even the Carmilla or something like a Kufra, or I think even a Kaja perhaps, just like you said, maybe giving EXP who can gather up people, something like an Arlord, something like a Sora who with his shifting clouds can give at least, 3 men set, and Kaja can follow up with Divine Binding. That could have been really, really better for them. Because of course picking Uranus makes sense, but then you really need to put in mind that there was nothing who can hold back the Hirara because it just reminds me of those old days when Ling, Gushin, these kind of assassins used to dive in, Fanny, and then there was literally no one to pick them up. So there was at least one thing, maybe a Chow, maybe a Franco for the suppression, even the old Kaja, just lock down that one heavy burst assassin at least. They could have at least gone in for that. Yes. And yeah, EXP part, as you mentioned, it was just, so necessary that, some enabler, you need some enabler with the Kaja, as you mentioned, like, the Soras or maybe Arlord. Arlord would have, worked definitely well. But I don't know, like, if Arlord, passive works with Kaja's Divine Binding now, I think it should, right? Because it It just should, right? yeah, Haven't it should. tested it. Yeah, because, maybe, because if it works with Even a a guy, Gunivere. I Ben. think a Gunivere jungle could have worked really well too. Oh, yeah, with the divine binding, I think, yeah, either you need an enabler into your jungle or you need an enabler into your. Yeah, that's what Young Gun Galacticus were. They did against Team Arlot Spirit. and Gunivere combo. Yeah, because that's what they did. Supported combo. Yeah. So, yeah, sometimes you need to work on to draw for too much scaling at this point. Either you go for the Moscow or via SS, but you went for both and you didn't even wait for either of them to, get the power spike. You were just fighting. I just shows the lack of discipline, in my opinion. But yeah, you know what? This is Scrim, so here you just practice draft and learn from your mistakes. Again, on to the second game. Los Surrealists versus Team Dreambreakers. Dreambreakers onto the match pointers. And now we see Cook Your Royce has the first ban. What is it? What is it going to be this year? I think the Marcel and the Paquito, I always see them banned away regardless. So then again, I might even be a Hirara because Team Breakers did already show that how good they can play up on that Hirara because the synergy between the team is really well. But here we have it, the Atlas, the Aurora, Paquito of course, and Marcel. Even the So fullest last two bloom bands coming up. So pales look at that, before the Hirara. scattering petals. I mean, you would have just wait to let the Team Dreambreakers ban the Hirara. But I think they are not willing to take the risk. Dreambreakers, what they will ban here? Will it be the Belleric? I think it should be the Belleric, right? Maybe what else is Kaja? left? Kaja. No, I think they have the answer for the Kaja. But now I think Team Hmm. Lost Realists might go for the Valentina Come first on, pick if they want Dexter. to go It's for the our Kaja. showtime. Oh, Claude. I see Claude pick. That can be countered. Let's go Brody, to be honest. Hey, even a Leslie, just use your first skill and stand there. Nothing can hurt you. Unless and I until the see. plot just uses as the first skill to remove the camouflage. But the I don't think first so. pick, Camouflage is removed by first skill now. Because I she got a think. bit of a buff, but it gets removed a bit late, but it does get removed. Yeah. Oh, And oh, even towards the I oh. late game, might though, she not can be a just lighted one tap man, the but I goddess. do Yeah. know my trade. Barat's Science, first this is what I was pick. talking about. Why not Barat? And here we have it, the Barat. Barat's first pick. Let's see how Team Lost Realists will, now make their draft flexible
Dream Breakers have the go for Freya, man. Let's just go for Freya. At this point, you will have 2 damage dealers on 2, and you will not. I don't know why they don't pick the fan the Freyas. Oh, now I just see the Freya, and we don't know that where the Freya will be going. I think maybe the EXP, maybe the gold or the Sushin for the early game part. Early game quite too strong for Team Dream Breakers. Lost Sureales have the opportunity to pick out either into the mage section, can go for the Kimi because right now they have the Freya, and you might go for the okay Selena. That's interesting. Okay, a Kufra. Classic counters. I see. Let's see how this Kufra works out. Because if he plays well, it will be a nightmare for the Freya. And once again, we do see the Allison coming. So, now will we see Gary and the Moscow getting banned away? Yep, there it is. We have it. Gary once again being prioritized ban in the second phase by the fellow team Dream Breakers. And let's see what team Lost Sureales opt for. They've already picked up Selena, so the card for the Lunox also goes away for them. But then again, since they do have the Barats, he can literally remove the late at least one person from the drafts. The only issue for this Barats will be the Lucian. And with this, we have to explain what is left. Soul, tell me what is left. Yeah, Brody is always left. Clint is left. So yeah, but still, Clint is strong, but then late game potential coming in from the Clint kind of a bit false. No, I think if you go for that, the Berserker Fury, I think it's just enough for Clint. But Brody, as you mentioned, but Alice can literally separate the MMOA, especially if it's the Clint. Melissa's left. Holy! Save my nation from falling apart. Melissa's left. I think they should just go for Melissa at this point. Alice is the only person that is going to give some. I don't even know Alice. Right? Alice just also gets decimated by Melissa, to be honest. So just go for Melissa at this point. Yeah, I think Priya with a Pauldron can kill Melissa into the late. I think she can. But no. Hell no. They just go for Erithel. Understand the idea for Erithel. If they dive into you, or maybe if the Kufra dives, you can just give initial or maybe instant follow up to the Kufra with when he go for the Tyrant's Rage Revenge combo. But I mean, Hayabusa against this YSS. I will tell you why the Haya, because on paper it's counter for YSS, so that's why they opted out for the Haya. But they left the Belric open, and I was about to say, why not Belric? Nobody picked the Belric. Come on, Belric is better counter for Freya than this Kufra. Dream Breakers might have won the draft this time again. By a little bit though. But do not forget they have the Selena. Early game, yeah, they need early game snowball. But you know what? They have the Zushin as well. So early game, if the Zushin, I mean, yeah, it can be anybody's game. One jump from Kufra, one stun from mid pressure. Yeah, mid pressure is a lot in this match. But it depends how fast will this mid duo rotate. I just build it because of the Belric. I think mid pressure will be on to Selena as well because the taunt will be annoying as well. But yeah, as you mentioned, Selena's stun can even melt down the Belric. And there's a Purify for that. Respecting even the Purify for Freya, respecting the Selena this time, and even that Kufra. I love it. And even that, the guy, Barats. Yeah. Well, when Barats is small, he looks really cute, just like right now. But here we are, ladies and gentlemen, into the Land of Dawn. This is the second match of the best of 3. So, will there be a comeback from the side of Team Lost Sureales, or will it be a straightaway clean sweep from the side of Team Dream Breakers? Holy. Because you can already see that I think this Selena as well as the Kufra, they will be moving on together. But in the bot lane, of course, Erithel, though she is not strong enough, but that is a very bad positioning, needs to move away, gets stun locked, gets taunted down, tries to run away, uses up the sprint, manages to escape. And with this, again, like we said before, Soul, the Kufra as well as the Selena needs to rotate so fast, but why is it taking them so long to rotate? I don't know, even the, Selena's stun is not even that surprising, to be honest, so yeah. But maybe it's just too early to, say something like this, but yeah. They just saw that 2 people are in the mid lane, and the Kufra was just checking the bush.
You know, if Snow hasn't missed his or her taunt, that would have been the first blood for Dream Breakers. The Abyssal Arrow though connects onto Zushin, now onto Beleric, the follow-up jump coming in from the Cobra, the ball also, but Levi's is already level 4, uses out the Mountain Shaker right before the turtle. And with this, 4 members are moving away, just look at the dominance coming up. It's somehow like Team Dream Breakers look more aggressive, even though the early control is more in the hand of losses. Look at the flicker jump coming in from the Cobra onto the YSS. He's trying to move away, does have the first immunity dash, but okay. Barats is also still level 3, running after the YSS should have just prioritized getting level 4, but look at the first blood coming in from Max. It's a beautiful shadow connects onto the YSS, and now they have a free hand onto the turtle. But all the way from the bot lane, we also have the Freya diving in onto the Cupra and stun connects though, but Bonzo literally getting sandwiched between 4 members, and our dinosaur doesn't really know whom to pick off at this point. And with this lead which they got onto that YSS, it's kind of taken away once again because easy turtle for the other team Dream Breakers. But look at the Alice, the way she's trying to zone out Max, not giving her the opportunity, but the stun connects once again along with the ball and the dash coming in from the Kufra and the Crimson Beacon and the Mountain Shaker. A lot of issues is being used up out there, and with this the Belrix are turned and Kufra unfortunately gets deleted once again. But look at that, the Nom Nom along with the flicker right onto the turret. A lot of damage taken in by HS4, but manages to move away with the first kill and even grabbing that kill onto the Barats. And at this point, Soul, I think it's the micro which is really good onto the heroes itself from the side of Team Dream Breakers. Yeah, and now I think Dream Breakers are, just shattering the dreams of Team Lost Raiders to win the scrims, because they are trying to dominate and they are successful of that. But there is a shadow 3-man taunt coming in. Not a taunt, but a Tyrant's Rage Revenge combo coming in from this Kufra, but not enough damage to take the Freya or the Alice down. And I think they will be in the harm's way for now. And the Freya, just onto her work, need to go for that bottom lane tier 1 structure. And good set, full-man set coming in from the Kufra. You hardly see good Kufras nowadays, but I even love that combo which comes in from the Alice. Because even in the last game, her arts were so well timed. She's not the set maker, but she ults when everything has been used up. So once again, the stuns connecting up onto the Belric, but we also have the Selena as well as the Crimson Beacon. But with this HS4, just look at the domination. She's literally zoning away the Hayabusa right from the early. And somehow Barats is kind of struggling. Meanwhile, in the bot lane, we do have a 2 versus 4 situation coming up. The stun connects. The Kufra also tries to dive in. The flicker being used up along with the heal coming in from the Belric. Well, I think not in a burst. And Team Dream Breakers already into a rampage. Yeah, Abyssal Arrow connects onto Yosha. Would love to see some itemization, because I think Team Dream Breakers are ahead quite a bit in this, in the gold, in terms of gold, 2.4k ahead. Oh, and interesting, Zushin opting out for not her anti-heal for first item, I think. What is she going for? Wishing Lantern or maybe the COD first rush? Oh, a Cursed Helmet. Okay, never mind. A good set coming in for the Kufra, Mountain Shocker, Power Dryads as well, but there's too much damage. Abyssal Arrow connects to that Beleric. Might go in this time. Beleric falls down, and who is next to the chopping block? No, a Nom Nom. That is going to be Daytona's welcome. And a shutdown that has been won by that Selena. Double kill. And 5-for-5 scoreline this time. And finally, okay, the Freya diving in onto the Erythel does not really have the sprint. Will be literally getting deleted, but Hayabusa is there with the shadows. The stun also connects down, the Purify being used up by the Freya. But this, the Kufra a bit too late onto the jump. Meanwhile, they really need to clear out the mid lane because the Zushin is trying to take away the first tier. But this is pretty good, I would say, synergy as well as the gameplays too. Even right from the side of, I think Team Dream Breaker is kind of strong onto the heroes. And especially that Alice, man, the amount of good sets she gives. It's kind of, they know when she's the one who will be the initiator. She even knows when she is the one who has to follow up the Belric. So I think the synergy between the Alice as well as the Roamer in both the games is really good for them. Because I think they know what to do. But you have kind of a bit of overextension here, because
The Vices wasn't there, fight. but it is what it is. But meanwhile, just look at them once again. The team fight happening. Look at the Alice and the second tier almost falling off the Crimson Beacon, and a lot of stuns connecting up left and right from both the sides. And need to force back for the kill spree for Max as he goes behind, takes down the Zushin but gets stunned, and one hit from the YSS. At this point, he's kind of really farmed up, but Alice, a good time's revenge in 2 inside the turret, but then the damage isn't enough as it is a triple kill for the YSS. Why did she didn't use the heavy crossbow? Azex, hell nah. Hell nah, I mean, come on. Oh, that was such a good set coming in from the, this dinosaur. Barats with the, not even with the Daytona's welcome, but with that missiles. Look at the missiles, and goated set. Look at the Kufra with the follow-up, instant Tyrant's revenge. But no heavy crossbow, she had that, look at her green dot, she had that, heavy crossbow. Didn't use it, come on. Holy, come on, that should have been the kill. If Vices falls down, no turtle, no lord for them. It could have been a, game-changing moment for Team Lost Sureales in this game, but no, I think this Azex just underestimated his damage a lot. I think she's waiting for the late game, but then at least use the first second combo, right? You can shred up the defense, so at least someone will be able to utilize that passive defense shred. Yep. She didn't even use her ultimate. What can I say? Really missed opportunity for the Irithel. I mean, at the end of the day, you are dying anyway. Why not try before you die? But Kufra jumps in once again. The Tyrants went on to one person. The Crimson Beacon. The stun connects on to Zushin. Cannot really follow up, but the alt taunt connects in. Look at the Alice once again with the ultimate. The Nom Nom comes in and stun is there, but damage isn't enough. Finally, we do have the Irithel trying to dish out some damage. Meanwhile, just look at the Kufra denying the dashes to the Freya, and not any casualty. Well, unfortunately, the sets are good, the gameplays are good, but the goal difference. That should be Team Lost Sureales fight in my opinion. But yeah, Team Dreambreakers now with the trade-off with the Lord, and now they will focus on to the turrets. That will be the top lane and the bottom lane tier 2 turrets. And now Team Lost Sureales, they need to defend and they need to play into the back foot. But however, this guy Max is playing out of his mind in this game. Azex and even the Selena, that was such a goated abyssal arrows, just connecting, just zoning out that video from the fights with the abyssal arrow that connects onto the nick of time, and that will be corrosion side Freya. I think it's good in this. She needs her passives a lot faster. That's a set coming into the Kufra, and I think the Holy Shield will be procced off now. The Lord will be hitting the mid lane base structure. If the Lord, no, oh yeah, it hit the structure base turrets into the mid line. We can see there is again Tyrant's Revenge. No Tyrant's Rise for now, and we can see Snow going in, but good missile. Look at the Alice 3-man side in the back line. But unfortunately, he might be getting taken down out there as it takes it down, but doesn't really matter because look at the Hayabusa trying to dish out some damage, trying to take down Brio. Of course, that happens, but a mega kill for Yosha as he will be trading it off with the backline. Still has a lot of dashes, a bit of a shield, a bit of a heal, but here is the Hayabusa with the second skill. The shadow connects and Yosha gets taken down, but then first inhibitor and 2 holy shields topple for the side of Team Lost Sureales. And with this, Belric going up, the stuns, I think the stun connected onto someone. The Vices also joins in along with the Mountain Shaker, but Nom Nom is there, and the Dinosaur does have a lot of stats. But with this, just look at the dash coming in and a mega kill for the Vices, but then a killing spree for Max, who just trades it off. Finally, a shutdown into the hands. Will they be able to get some comeback? I mean, we might be able to see some build-up coming in from Lost Sureales. Need to see some itemization. Oh, never mind. We will be seeing the highlights. That's such a good shuriken as well as. Did you see that he waited, for that, Vanix OP to use that dash. Then only he used that shadow to gain a Vorex. Okay, never mind. A Vorex is a good item, and he's going for the backlines as well. So I'm all for it. Or okay, nah. What did I just see? But never mind. The Sky Piercer stack might be like 40-50 for that. Maybe not the 40, but under 40, I guess. You can see there is a lot of damage coming in from the Yosha. That is a missile. This time missile doesn't connect, but that's a good taunt, and that's a Crimson Deacon as well, a power riots. And I don't think so it's a good time for Daytona's welcome, but he will be using the Daytona's welcome onto the Beleric, but misses out with the stun, but the missile will be connecting onto the Alice. Alice will be hums away with the dash.
And Alice falls back into the safe hands. 30 seconds for Lord, and again, not a good look for team Lost Sureales. However, into the back line, we just saw the Max trying to get his hands onto that Zoshan. But fails to do so. And now, that will be the first, not the first, but the free Lord for Team Dreambreakers. I love how the Hayabusa, he is prioritizing killing the minions, clearing out the lanes just with his ultimate. And that could, I would say outplay coming in from the Hayabusa, because when he used up his ultimate, Viasis thought that he will be just one basic attack hit away, but then somehow it was the Hayabusa who managed to grab that kill onto the Viasis. So with this, a really 12-minute Lord into the hands of Team Dreambreakers. Let's see, the mid lane inhibitor has been taken away, and how Team Dreambreakers will be taking up those lanes, syncing up those lanes, because it's really required. And Snow just providing some vision seam goes in for the Kufra. I really don't know how at this point will Lost Surreal be able to defend, or how they will be able to defend, because I really think, from front they have the Battle Rake as well as the Crimson Beacon. From behind, it is the Alice. But never mind, Lord marches in. And here they are opting out to go and finish with the, never mind, that is going to the Daytonas. Welcome Alice with the set, with the flicker as well, Thorn of Ruin, but Rezek with the sprint, have to fall back, power rides onto 4 people, and that's with the kill from the Zushin. And again they are going in, Mag is trying to defend, has the shadow kill, but I don't think so. They're marking on the base is quite too low. We can see Mountain Choker from Manix OP recall taunt, and the base is quite open. A Team Dreambreakers winning this game. Well, I would say a sheer domination. Good fight coming in from in this match from Team Lost Sureales, but Dreambreakers with a clean sweep. Yep, I think not even a clean sweep, really clean gameplay also coming in from the side. Especially really loved how that Alice, she knew when to engage, she knew when to follow up, she knew how to go in, she knew how to go out. Like, she was taunted, she was stunned so much, and yet she had become so hefty towards the late. Like, I think she created more than half the opportunities, because I think towards even this last team fight, as we can see, Kufra did manage to give a good set over there, 1, 2, 3, 4 people, but then, there was this Alice diving into the backlines and denying any follow-ups for the Kufra. Where, in pretty good gameplay, it was kind of, the entire team was sandwiched. From front, it was the Zushin as well as the Belric, and then suddenly, without any warning, it was the Alice from behind. And then, of course, the Freya, as well as the other member, they had all the time in their life to just dish out a lot of damage. So, very clean, very good gameplay coming in from both the teams. And with this, we will be signing off for now, but do stay tuned because we do have more BO3s coming up.
स्वागत है देवियों सज्जनों आप सभी को। मैच टीजी में साथ रहेंगे शिनरा फॉर द मोबा वार्मअप क्लास सीरीज। आज है थर्सडे और ये है सेकंड लास्ट डे फॉर दिस वीक। कल अपना आखिरी दिन रहेगा, उसके बाद सीधा आप जाएंगे टूर्नामेंट के लिए। इतने दिनों के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम जब टूर्नामेंट हुआ था दैट इज योर थ्रोन के लिए, एंड देन राइट नाउ वी आर बैक फॉर द अनदर टूर्नामेंट, अ लिटिल वन बट इट इज अ टूर्नामेंट सो ऑफ कोर्स। तो क्लास ऑफ स्टारलाइट के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो मुझे जानना है, क्योंकि इस सीरीज के बाद आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी हमने रखा है। उसके बाद क्लास ऑफ स्टारलाइट खत्म होगा, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तुरंत एल्गैम्बो ईस्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मैच बेहतरीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन दिस काइंड ऑफ गेम। ये है वैलेंट गोल्स बनाम टीम गॉडफादर्स का मैच। और आपको पता है कि वैलेंट गोल्स और गॉडफादर के बीच में पहले भी एक मैच हुआ था जो कि बहुत ही बढ़िया घटा था, व्हेन मॉरियन रॉयल्स एंड गॉडफादर्स के बीच वाला मैच भी मस्त था। तो डेफिनेटली अभी वैलियंट गोल्स एक टॉप कंटेंडर है फॉर द क्लैश ऑफ स्टारलाइट, क्योंकि वो फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंड आई हैव सीन द 16 टीम्स हु हैव बीन एनरोल्ड देमसेल्फ इनटू द रजिस्ट्रेशन पैनल ऑफ क्लैश ऑफ स्टारलाइट। तो वो एक टॉप कंटेंडर में रह रहे हैं एज पर मी। तो अगर मुझे कोई पावर रैंकिंग देने बोलेगा तो मैं वैलियंट गोल्स को ही अभी पावर रैंकिंग में दूंगा फॉर द फाइनल कंटेंडर। एंड दूसरा फाइनल कंटेंडर आई थिंक इट शुड बी somewhere between Mauryan Royals and Godfather. तो definitely ये मैच थोड़ा सा बहुत ही important है। By the way, Shinra is here, so Shinra, what do you think? क्या लग रहा है आपको कि क्या Valiant Goals के पास वो मौका है इस बार to take on the series and to take on the tournament? बिल्कुल, मेरे को लगता तो है एक अच्छे कंटेंडर जरूर रहेंगे, लेकिन सामने थोड़ा सा मैं बोलूंगा जो क्यूई नोवा है, उनका शायद अभी मैच हुआ नहीं था वैलियंट गोल के साथ। मैं सोच रहा था कि लाइक काश एक मैच तो हमें आते हुए दिखे नोवा की। बाकी अगर क्यूई की बात करें, बाकी जो उनके जो सब थे, लाइक जैसे कि आप बोले नोवा के अलावा मतलब क्यूई आपकी जो दूसरी थी, उनके साथ जरूर मैच हुआ था वहां पे। लेकिन नोवा एक बहुत अच्छे कंटेंडर बन सकते थे उधर सामने की तरफ अगर होता वहां पे मैच, तो वो अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे टीम गॉडफादर वर्सेस वैलियंट गोल्स हमें देखने को मिलेगा, थोड़ी सी कांटे की टक्कर होती हुई दिखेगी। हिरारा पिक आता हुआ दिखेगा वैलेंस की तरफ से, और उसके साथ साथ इडोरा पिक। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इडोरा की बात की जाए, मेटा पे अभी रिसेंटली आ चुकी है। अब इन लोगों ने ना काफी अच्छे तरीके से फिगर आउट कर लिया है कि बेसिकली आपको इडोरा का पैसिव जो है वो किस तरीके से यूज करना है। आप थोड़ा सा बस जो है सैक्रिफाइस करते हो, लेकिन उसके बदले आप जो है ना एक ऐसा सीडी रिडक्शन बिल्ड बनाते हैं यहाँ पे एसटीजी, जिससे कि आप अपना जो फर्स्ट स्किल है लगातार बार बार मतलब ऑलमोस्ट बिना कूल डाउन के यहाँ पे स्पैम कर सकते हो। और वो जो डैमेज है ना लगातार एओई डैमेज, एओई तो नहीं मैं बोलूंगा, सिंगल टारगेट जाता है वो जब भी आप लाइक ऐसा सुपर कंडक्टिव उनका जो पैसिव रहता है वहां पे रहता है। तो लाइक वो टैंक को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, या जो भी फ्रंट लेनर टैंक्स हैं जो भी फ्रंट लेन करने के लिए आते हैं उनको लाइक बहुत ज्यादा पोक करने का वो जो है वहां पे मौका मिलता है। और इडोरा इस समय बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, लेकिन उसी का जवाब देने के लिए वहां से आते हुए हमें दिखेंगे वाइसेस पकीतो, और उसके साथ साथ ओके वेलकैरी हमें आती हुई दिखी है, यानी कि फ्रेया, उनका भी आगमन होता हुआ दिखेगा। तो दो फाइटर यहाँ पे लेते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड लेन हो सकता है, क्या ये होने ही वाला है कि गोल्ड लेन पे हमें जो है या तो पकीतो या तो फिर फ्रेया हमें आती हुई दिखेगी। और उसी के साथ थोड़ा सा अगर हम नजर घुराएंगे तो यहाँ पे एस्मराल्डा का आगमन हो गया है, जो दोनों को ही काउंटर करेगी। कमाल का पिक यहाँ पे। डेफिनेटली एस्मराल्डा एंड द EXP एक तरीके से काउंटर करेगी फ्रेया को, क्योंकि हमें पता है कि एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा रहता है। बट यही चीज मैं बात कर रहा था कल रे भाई के साथ, मेरी कास्टिंग हो रही थी लास्ट गेम पे, हमने देखा डिरॉथ का आगमन फ्रॉम टीम किंग एंड इट लिटरली वर्क सो वेल। एंड डिरॉथ अभी चल रहा है उस स्टेज पे। आप बेटर देन फ्रेया, बेटर देन यूजोंग, मैं कहूंगा कि डिरॉथ कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप डबल फाइटर कॉम्बिनेशन के लिए जा रहे हो। बट कोई बात नहीं, उनके पास पकीतो पहले से मौजूद है, तो इसलिए थोड़ा सा सस्टेन काइंड ऑफ थिंग जाना जरूरी था। तो फ्रेया के पास वो एबिलिटी रहता है कि वो अटैक स्पीड के साथ अपना सस्टेन बना ले। इसके कारण शायद से फ्रेया पे क्या पे किया गया। और साथ ही साथ जबकि वो गए हैं दो फाइटर के लिए और उसके बाद टैंक भी आने वाला है, तो कैरी बैन करना एक लाजमी रहता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वो कैरी को बैन किया गया है। सो द मिनोटोर इज बीइंग टेकन आउट एज वेल। फिलहाल के लिए दो पिक्स अभी आने वाले हैं तुरंत, एंड बहुत सारे टैंक ऑप्शंस को टेकन आउट किया गया है वैलेंट गोल्स की तरफ से। ग्लू, कुफरा,
मार्शल, काजा, अटलास, पांचों के पांचों टैंक उनकी तरफ से बैन किया गया है। तो डेफिनेटली ये इफेक्ट रहेगा ऑन टू द हैंड ऑफ टीम गॉडफादर, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वो टिग्रील के लिए यहाँ पर कॉर्नर्ड हुए हैं। एंड देयर इज अ फास्टा कमिंग इन एज वेल। हाई लॉस का ये पिक वैलेंट गोल्स की तरफ से आखिरी पिक शायद से शिनरा मुझे लग रहा है इफेक्टिव रहेगा इफ यू विल गो फॉर समथिंग इन द ट्रू डैमेज। कैरी इज नॉट देयर, सो बीट्रिक्स और नतान के बीच में कुछ चुनना चाहिए इन्हें। नेतन एक अच्छी चॉइस बनते हुए दिखेंगे, लेकिन नहीं यहाँ पे ओके तो गोल्ड लेन पे भी फाइटर के साथ जाते हुए हमें देखेंगे। वाइडर वर्सेस फाइटर यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। ट्रू डैमेज के लिए यहाँ पे एक्सबॉक्स लिया जाएगा। एओई का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से होता हुआ हमें दिखने वाला है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पकीतो का जो बस्ट है, जब आपका आर्मर चला जाएगा तब आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि पकीतो वहां मौजूदा रहेंगे अपने फ्लिकर के साथ आपको बस्ट डाउन करने के लिए, और वहां पे उनका जो डैमेज है कमाल का पड़ता है। थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ेगा। अर्ली गेम की बात करें, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि वैलेंट गोल के पास बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उनके पास लाइक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे हीरोज, उनके पास हिरारा है जिनका लेवल 2 में ही आप बोल सकते हैं कि एक स्पाइक आ जाता है और इन्वेट करने के चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। टिग्रेल होने के सामने जो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि वो प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम ने यहाँ पे ब्रॉडली एक तरीके से बोल सकते हैं लाइनअप लेते हुए दिखे। तो दोनों के पास यहाँ पे एमएम नहीं है तो टावर के ऊपर दिक्कत होगी, लेकिन वाईएसएस एक साइड है यहाँ पे गॉडफादर के, जिनको उसमें से थोड़ा सा फायदा होगा। अगर एक भी टीम फाइट यहाँ पे टीम गॉडफादर जीतती है लेट गेम में, तो वाईएसएस जो है वो भाई स्ट्रक्चर फिर बिना टाइम लगाए गिराएंगे, और ये सबसे बड़ी कमी यहाँ पे वैलेंट गुल्स के लिए बन सकता है इस समय। ओके, आप देख सकते हैं कि पकीतो को EXP में भेजा, गोल्ड पे यहाँ पर फेयर खिलवाया जा रहा है, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ दिस एक्सबॉक्स लास्ट पिक, इसके कारण वो थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। स्वैप इनटू द लेन एंड दैट यू कैन डू विद अ डबल फाइटर कॉम्बिनेशन। तुरंत यहाँ पर एंगेज करते हुए यूडोरा विद द स्टर्न फर्स्ट किल स्टार्ट फॉर वैलियंट गोल्स। एक बहुत ही अच्छा उम्दा स्टार्ट यहाँ पर, थोड़ा सा ऑफ पोजीशन गए थे वहां पे फॉर्सा, जिसके कारण उनको भुगतना पड़ा। शी कॉट ऑफ गार्ड। आर्ची बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि वो प्रेशर लगातार पकीतों के ऊपर बना के रखे हैं, जिसके कारण उनको थोड़े से मिनियन लूज करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा फार्म उनका जो है कम रहेगा इस समय, और अच्छी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे जब आपके पास ऐसा एडवांटेज रहता है लेन पे। तो अब ऐसी बात है, आप लेन को जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल में खेलेंगे, जितना ज्यादा आप मिनियन से दूर रख सकते हैं हीरो को, उतना ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेज क्रिएट होता हुआ दिखेगा। और इस समय वही हो रहा है, टिग्रेल को यहाँ पे आना पड़ रहा है ताकि पकीतो थोड़ा सा फार्म हो सके। दूसरी साइड बात करें, वाईएसएस बहुत ही अच्छे तरीके से फार्म हो रहे हैं, और मैं बोलूंगा कि बहुत संभल के खेल रहे हैं। उनको पता है कि इस समय कितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ उनके लिए। और देखिए रोटेशन आता हुआ दिखेगा, ट्रिगरेल थोड़ा सा पीछे हटेंगे, लेकिन उनको स्टन दिया जाएगा। इडोरा वहां पे मौजूदा रहेगी, चावर के अंदर लेके आए हैं, डैमेज लग सकता है, अच्छा खासा डैमेज। माउंट शॉकर का इस्तेमाल, लेकिन ब्लेकर का इस्तेमाल करते हुए मेज पीछे से निकलेगी, डैमेज आएगा। ओके, ट्रिगरेल यहाँ पे बहुत ही कम एचपी बच के हुए निकल जाएंगे। एक्सबॉक्स का आगमन हो चुका है, अल्टीमेट लगेगा, अल्टीमेट का इस्तेमाल कर दिया। इंसैनिटी यहाँ पे यूज कर दी गई, ज्यादा फायदा होगा नहीं, पीछे हटेंगे। बहुत जल्दी यूज किया, लेकिन हिरारा यानी कि कियोशी वहां पे आए, वो किल लेके हुए जाएंगे, दिक्कत में पड़ सकती है वाईएसएस। ओके, एक एचपी बचते गए हैं, और टैंक ओ माय गॉड बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे लेते हुए, और उस रिस्क का भी फायदा यहाँ पे मिलेगा। 3 किल के साथ अच्छी शुरुआत होती हुई टीम वैलियंट गुल्स की। 3-0 एक भी ट्रेड यहाँ पर लूज नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्टल के लिए अभी मुश्किल हो सकता है कि कहने पर आता हुआ एस्मेराल्डा को यहाँ पर टॉर्मेंट करने की पूरी कोशिश। एस्मेराल्डा विद अ ब्यूटीफुल अब्सॉर्ब बैक करेंगे ऑन द सीपर साइड। निशंजन के पास वो मौका है, बट यहाँ पर सिक्योर किया, किल सिक्योर करेंगे, और तुरंत यहाँ पर रिवेंज भी ले लिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। 4-1 का ये स्कोर, लेकिन ऑन टू द टॉप रहेंगे यहाँ पर हिरारा। तो देयर इज अ डिफिकल्टी फॉर क्योशी टू एक्चुअली रीच आउट द टर्टल, बट इन द मीन टाइम आर्ची गॉट अनदर वन अगेन, एंड टर्टल गेट सिक्योर्ड बाय नॉइजी हियर। इट्स ओके, टर्टल के बदले 2 किल तो चलता है, लेकिन उसके बदले में को थोड़ा सा भी इक्वलाइजर पे लाना पड़ेगा। फेदर या स्ट्राइक पर आता हुआ हिरारा ट्राइंग टू इन्वेड आउट द बफ, वेयर इन फॉर द रिट्रीब्यूशन गेट द ब्लू बफ अवे, बट अभी यहाँ पर चेज डाउन हो रहे हैं, उनके पास इम्यून मौजूद नहीं, शट डाउन मिलेगा। उठे और उसके बाद उठकर सैंसीज ने यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवेंज अपना स्वीटली लिया है। 2-5 का ये स्कोर। दैट्स द थिंग अबाउट गॉडफादर कि उन्हें पता होता है कि लाइक इवन इफ अर्ली गेम हमारे पास थोड़ा सा झिझका है, लेकिन उसके बाद कम बैक कर सकते हैं। ओह माय गुडनेस, द वे स्टैंसेस इज प्लेइंग राइट नाउ,
टरेट सिक्योर किया है, 3 किल सिक्योर किया है एंड डेफिनेटली वन ऑफ द कोटेड प्ले यहाँ पर उनकी तरफ से चल रहा होता है। देखिए फिर से on to Noi and now the chasing down the high loss glorious pathway है नहीं, बट यहाँ पर रिट्रीट वो कर लिया जाएगा। 4 किल देख सकते हो गॉडफादर का ऑन टू द स्कोरबोर्ड एंड उसमें से 3 किल स्टैन 6 ने लिया है, स्टैन सीजी ने लिया है एंड उन्होंने एक टरेट भी निकाल दिया है शिंडा बिफोर 5 मिनट्स। मैं यही बात कर रहा था कि टरेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा लूज करती हुई दिखेगी। लीड गेम की मैं बात कर रहा था, लेकिन अर्ली गेम से ही वो प्रेशर यहाँ पे कर लिया क्योंकि फ्रिया वहाँ पे मौजूद है, उनका बेसिक अटैक टावर के ऊपर लगेगा, उसके साथ वायरसेस वहाँ पे मौजूदा रहेंगे, उनका जब डैमेज आएगा तो वो भी टावर को सीधा क्लियर आउट करते हुए दिखेंगे। अब पूरा फोकस यहाँ पे फ्रिया के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एस्मेराल्डा मार्क करने के लिए पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। दूसरी साइड की बात करें, एक्सबॉक्स बहुत ही कम एचपी बचते हुए दिखेंगे, फ्लेकर का इस्तेमाल किया, पकीतो ने सही समय पे पीछे हटे। और मैं इसी की बात कर रहा था कि गोल्ड लेन पे आई मीन एक्सबॉक्स आपने उठा लिया वो ट्रू डैमेज सोर्स के लिए, परंतु इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा आपके लिए क्योंकि एक बार आपकी शील्ड जब गई तो फिर आप एक तरीके से बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे। यहाँ पे बचने का प्रयास करते हुए जाएंगे, लेकिन नहीं, इस बार आर्ची पूर्ण विराम लगाएंगे फ्रेया के ऊपर। उसी के साथ एक और टर्टल लेने का प्रयास करते हुए दिखेंगे, टिग्रेल की तरफ से स्टन आता हुआ दिखेगा। ग्लोरियस पाथवे सीधा गए हैं चेज डाउन करने के लिए, पीछे की तरफ वायसेस बचेंगे, इम्यून का इस्तेमाल किया, फर्स्ट किल बचते हुए निकले हैं। टर्टल यहाँ पे सिक्योर हो गया है, ओके दिक्कत हो सकती है। चिग्रेल के ऊपर प्रहार, योशी एक और खेल लेते हुए जाएंगे इस समय। अगर वैलियंट गूल्स को यहाँ पे जीतना है तो उनको ये रोटेशन जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा और हर एक फाइट के बाद ना उनको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली, और ये कन्वर्ट करने के लिए आपको फटाफट से टावर निकालने पड़ेंगे क्योंकि टावर आप जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप ट्रू वे में विन नहीं करेंगे, क्योंकि किल्स आप चाहे 20 ले ले 30 ले ले, टावर एडवांटेज जो है वो टीम गॉडफादर के पास है अभी। चलिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा गया है टीम वैलेंट गोल्स के पास। माउंटेन शॉकर मिड लेन पे यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश उस स्ट्रीट को, बट इम्प्लोजन यहाँ पर बहुत बढ़िया, बट उसके साथ प्यूरिफाई भी यहाँ पर लगेगा। पीछे से यहाँ पर स्टैंड सीजी आते हुए टॉमिक करने की कोशिश उन्होंने इस्तेमाल किया है वेलकम का, और ये देखिए स्टन यहाँ पर एक लिटिल बिट ऑफ पोक ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल। लास्ट इंसैनिटी कम्स थ्रू द वे, फ्लिकर कम्स इन एज वेल, स्लेन मणिपुर गाय एंड नॉइजी गोस डाउन एज वेल, डबल That is a double with the last insanity। और ये देखिए पीछे से इतना ज्यादा डैमेज यहाँ पर आता हुआ ट्रिपल हो सकता है। टिगल ने बैक ऑफ किया है, यहाँ पर जरूरत थी इस बैकअप की एंड अगर एक्सटेंड करते फाइट तो कहीं ना कहीं ट्रेड्स और ज्यादा जाते वैलेंट गोल्स के पास। किल्स पे किल्स यहाँ पर इजाफा हो रहा है, बट द थिंग शिंडा टोल्ड कि लाइक किल्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करेंगे एंड ऑफ द गेम पे, क्योंकि दोनों तरफ देयर इज नो एमएम, देयर इज ओनली वन एमएम, दैट इज द ईशनशिन एंड हिरारा के पास वो स्पाइक मुझे अभी तक दिखा नहीं है इतना अच्छे से, बट 412 इज एक्चुअली गुड स्कोर फॉर क्योशी एंड इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट, बट उन्हें और भी ज्यादा स्कोर चाहिए क्योंकि ईशनशिन लेट गेम पे मैनेज कर लेगा अगर उसके पास अर्ली पे स्नोबॉल नहीं होता है, लेकिन हिरारा के पास अगर अर्ली पे एक अच्छा खासा लीड नहीं रहा तो फिर लेट गेम उनके लिए खतरनाक हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे जहाँ पे हिरारा ने अच्छा स्टार्ट भी किया है अर्ली गेम पे, लेकिन लेट पे जाकर बहुत सारी टीमों ने उनके अगेंस्ट एक अच्छा सा स्कोर बना के जीता भी है। तो डेफिनेटली ये गेम कमबैक्स का गेम हो चुका है। लास्ट इंसैनिटी फिर से यूज किया, लेकिन इस बार फराग आर्मर गोज ऑफ होगा विदाउट एनी that's a good one, but he's not going to survive। killing spree यहाँ पर एस्मेराल्डा की तरफ से एक्सटेंड करेंगे इस फाइट को। टिग्रेल को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देने की कोशिश थी। टर्टल आ चुका है, एक टर्टल गया है दोनों तरफ। शिना, व्हाट डू यू थिंक, थर्ड टर्टल कंटेस्ट होगा या फिर उसको इग्नोर किया जाएगा? उससे पहले एक छोटी सी किल ऑफ कैंप, फासा गोज डाउन, चेस करते हुए इम्प्लोजन का इस्तेमाल। 3 पीपल यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं और उसी को वो फायदा उठाते हुए अंदर जाएंगे, प्रेशर डालते हुए वैलेंट गोल्स। बढ़िया कोशिश यहाँ पे, और उसी के साथ टॉप लेन पुश करना चाहते थे लेकिन डिनाई किया जाएगा। मेज वहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच गई थी, जिसके कारण मिनियंस को पीछे आना पड़ा। और यहाँ पे देखिए एक और टर्टल वो जरूर मिलेगा, मिड का टरेट लेने के लिए कोशिश करेंगे और उसी के साथ फाइनली मिलेगी कामयाबी। मिड का टरेट टूटेगा, जंगल जो है और ज्यादा एक्सपेंशन मिलेगा यहाँ पे टीम वैलियंट गूल्स को। अब यही स्थिति है आपकी, आपके पास अच्छा खासा मौका मिल चुका है और यहीं से आपको जो है गेम एंड करने का प्रयास करना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप टावर निकालेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि लेट गेम जैसे कि हमने कहा था, लेट गेम अगर आएगा तो दिक्कत हो सकती है। अंदर की तरफ गए हैं, उसी के साथ इंसैनिटी का इस्तेमाल किया है, वेलकैरी डिसेंट का इस्तेमाल करते हुए जाना चाहते हैं लेकिन पीछे से रोका जाएगा और उसी के साथ एक और किल मेज का मिलेगा।
बढ़िया रोटेशन आता हुआ टीम वेलियंट घुल की तरफ से, कोशिश एक और रहेगी किल लेने के लिए, क्योंकि वहां पे मौजूदा है, रोकने का प्रयास, आर्ची एक और किल लेते हुए निकालेंगे टीम वेलियंट घुल की तरफ से। उन्होंने पकड़ लिया है ये नस, उनको पता है कि इस समय उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है फाइट ब्रॉल करते हुए इस मैच को जीतना। कोशिश रहेगी पकीतो रिकॉल करने में कामयाब रहेंगे, चुपके से वो स्प्लिट पुश किया उन्होंने और एक के बाद एक सारी टावर उन्होंने गिरा दिए, जिसके कारण बॉटम लेन का जो टरेट है, सिर्फ अभी जो है इन्वर्टेड टरेट वो बचेगा। हाइलाइट्स की तरफ नजर डालेंगे एक बार, जिस तरीके से फाइट आती हुई गई थी, वहां पे 2 किल मिल चुके थे, वापस आए सीधा कियोशी ने भापा कि शायद बुश में कोई हो सकता है, अंदर की तरफ पकड़ा, डैमेज दिया और उसी के साथ आर्ची ने फिनिश ऑफ किया। अब प्लस पॉइंट यहाँ पे वैलियंट घुल्स का यही है कि वो जितना ज्यादा हो सके ब्रॉल कर सके, और टीम गॉडफादर उनके पास एक ही मौका है, वो है बैकडोर करने का। स्प्लिट पुश उनके पास है, तो उसका पूरा फायदा वो उठाना चाहते हैं। स्प्लिट पुश पे और एक चीज अच्छा होगा कि लाइक एओई इफेक्ट जो आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, वैलेंट गोल्स की तरफ से स्लो डाउन एज वेल एज द बर्स्ट विद द रियल डैमेज, तो आई मीन ट्रू डैमेज। उसके साथ और एक फाइट यहाँ पर छिड़ता हुआ एंगेज इंप्लोजन, क्यूशी गोज डाउन देयर, शट डाउन हो चुका है, फेदर एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए Ferragamo goes out from the fog and we're gonna see the Valkyrie decent coming in, Noi as well as O2 got cooked here and double kill for the Freya, और अभी ट्रिपल आ सकता है। Esmeralda is getting chased down, doesn't have the, he goes in for the engage from himself, retaliate back नहीं किया यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर engage कर दिया, और जिसके कारण उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी, एंड ये पनिशमेंट बहुत दिल पे लगेगी, बिकॉज टेरेट वाइज आप देख सकते हैं, मैप वाइज दोनों टीमें अभी समान मतलब समान जगह पे ही है, और यहाँ पे लॉर्ड जो है वो यहाँ पर छीने की टीम गॉडफादर, उनके हिस्से में लॉर्ड इसलिए आ गया कि लॉर्ड पहले से ही आ गया था, ये भापा नहीं टीम वैलेंट गोल्स ने। अगर ये भापते तो उनका लॉर्ड था, बिकॉज आपके पास टियर 1 था मिड का, बट आप फाइट के लिए चले गए ऑल इन ऑल, बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ फाइट लेना चाहिए, बट इतना ज्यादा ओवर एक्सटेंड करके इनोवेटर के अंदर जाकर फाइट लेना इज नॉट रियली अ गुड चॉइस फ्रॉम देम, क्योंकि आपके पास रेंज वाले हीरो नहीं है, आप शॉर्ट रेंज पे खेल रहे हो, आपको एग्जीक्यूशन शॉर्ट रेंज पे करना पड़ता है, और जब आप टरेट के अंदर जाके फाइट लेते हो तो उनके पास इम्प्लोजन है, उनके पास फेदर एयर स्ट्राइक है, तो डेफिनेटली दे गोना यूज इट अप। एग्जैक्टली, और यहाँ पे ना बस यही इशू अब रहेगा, जैसे तैसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मिनियंस को कंट्रोल आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी ढीला अगर आपने छोड़ी, एक भी नजर आपकी इधर से छूटी यहाँ पे, तो वो नुकसान बहुत ज्यादा देता हुआ दिखेगा। देखिए मिनियंस आते हुए दिखेंगे, क्योशी फाइनली अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, और उसी के साथ डैमेज देने का प्रयास किया, लेकिन चिकरेल वो गलत जगह फंस गए वहां पे, और उसी के साथ टावर का डैमेज पड़ता हुआ दिखेगा, और ग्लो पाथवे का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाना चाहते हैं, हाइलॉस मौजूदा है, और यहाँ पे इंसैनिटी का इस्तेमाल करते हुए डैमेज दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से किल नहीं मिलेंगे, पीछे हटे हैं, और मौके का फायदा उठाते हुए पकीतो अगेन, वंस अगेन भाई पकीतो को पकड़ना पड़ेगा। लेजेंडरी एंटर की बात करें तो वो भैया अपना काम करते हुए जा रहे हैं, स्प्लिट पुश कर रहे हैं हर जगह से, वो शील्ड निकाल दी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट निकाल दी थी वहां पे। उसके साथ साथ अब उनको पता है कि उनका सिर्फ एक ही काम है, या तो टीम फाइट की तरफ अगर आते भी हैं, टीम फाइट अगर नहीं हो रही तो उसको इग्नोर करते वो सीधा स्प्लिट पुश के लिए जाएंगे, और यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पे टीम वैलियंट घूल्स के लिए आप बोल सकते हैं कि दिक्कत बनेगी है, क्योंकि लॉर्ड के लिए जितने बार जाएंगे पकीतो फिर दोबारा से जो है स्प्लिट पुश के लिए निकलेंगे। डेफिनेटली वैलेंट गोल्स तो अच्छा खासा काम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कर रही है, मुझे दिख सकता है ये चीज, बट उसी के साथ लेजेंडरी पैंटर अपना काम कर रहा है, लेकिन उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लेजेंडरी पैंटर कहीं ना कहीं दोनों होली शील्ड निकाल चुके हैं, एंड 12 मिनट हो चुका है, इसका मतलब तीनों के तीनों होली शील्ड अभी मौजूद नहीं है इनटू द लैंड ऑफ डॉन। यू कैन सी द वे दिस गाय इज डिस्ट्रैक्टिंग देम, और ये चीज क्या करेगा ना, आपको डिवाइड कर देगा फ्रॉम द टीम फाइट, एटलीस्ट एक या दो बंदा जो है वो रिटेलिएट करेगा बेस को टू डिफेंड द बेस, और ये देखिए एक छोटा सा एंगेज यहाँ पर करने की कोशिश, जस्ट पोक, जस्ट फ्लूक पोक करेंगे, पीछे हटेंगे, दैट्स व्हाट द स्ट्रेटजी बिहाइंड टीम वैलेंट गोल्स। कि ऐसा था कि लाइक थोड़ा सा रिसोर्स बेट करवाते बिफोर द लॉर्ड अप्रोच इनटू द लैंड ऑफ डाउन, हमारे लिए फायदेमंद होगा वो चीज, लेकिन यहाँ पे जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि लाइक एटलीस्ट एक बंदा अभी रिटेलिएट करेगा टुवर्ड्स द बेस, क्योंकि आपके दोनों साइड लेन्स जो है वो कहीं ना कहीं श्रेडेड हो चुके हैं, सिर्फ इनोवेटर्स यहाँ पर बचे हैं, तो और एक लॉर्ड यहाँ पे अगर जाता है कहीं ना कहीं गॉडफादर के हाथों में, तो देन दे विल हैव अ फुल कंट्रोल इनटू द मैप, व्हिच इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग फॉर द साइड ऑफ टीम वैलेंट गोल्स हियर। तो वो सारी चीजें नजर अंदाज नहीं कर सकते आप, उनको नजर में रखना पड़ेगा। टिग्रिल के पास धीरे धीरे सस्टेन आ रहा है, वो स्क्विशी थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिलहाल के लिए जब सस्टेन आ जाएगा थोड़ा सा दिक्कत
फेस कर सकती है टीम वैलेंट गोल्स। बट राइट नाउ द लॉर्ड यहाँ पर कंटेस्ट होता हुआ पीछे से हम देख सकते हो सकता है कि टिग्रियल एक सेटअप दे। लेजेंडरी पैंथर इज वेटिंग फॉर हिट एंड ही इज नॉट जोन्ड आउट देयर अंदर जाते हुए, लेकिन यहाँ पर फार्सा गोज डाउन देयर। वी गोना सी दैट किलिंग स्प्री ऑन नोई। मास्टर यहाँ पर भी फंस चुके हैं। टिग्रियल गोज डाउन, शट डाउन ऑन द पकीतो, डबल यहाँ पर सिक्योर करते हुए कियोशी गोज इन फॉर अ ट्रिपल। ओह माय गॉड, नॉइजी couldn't survive, and that might be a maniac coming in here onto the Freya. Let's see if Kiyoshi can make it through. No, shut down onto Kiyoshi, and that will be the revenge coming out from Archie, but Kiyoshi को वो maniac ना मिला। वो फाइट इतना बड़ा था लेकिन वो थोड़ा अंदर चले गए थे, उन्हें रुकना चाहिए था। मतलब मैं अगर maniac के लिए देखता अपने लिए शिंजा भाई, मैं पीछे रहता, let the team work, I'll just go and take the kill। कभी कभी भाई सैक्रिफाइस सबसे बड़ा धर्म है भाई। सैक्रिफाइस करना पड़ता है टीम के लिए, आपको खुद सैक्रिफाइस करना पड़ता है कैरी होते हुए भी। और यहाँ पे वो सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से फाइट यहाँ पे हुई और जो डैमेज आ रहा था वो कमाल का। उनको पता था वैलेंट गूल्स को, उनका फायदा ही इसमें है कि ब्रॉली पे जितना ज्यादा फाइट हो सके उतना अगर वो फाइट ले सामने की तरफ से तो जीतेंगे वो ही फाइट के अंदर। और उसी का फायदा उठाते हुए वो गए, डैमेज दिया। ये देखिए लगातार डैमेज देते हुए टावर के अंदर सस्टेन करने का प्रयास किया था यहाँ पे फ्रेया ने, लेकिन नाकामयाब। और उसी के साथ लॉर्ड का आगमन हो चुका था। विनाइंस मिनियन जो है वो भी आने स्टार्ट हो गए, तो एक और फाइट जल्द ही आती हुई हमें दिखने वाली है। लेकिन उससे पहले मिनियंस रोकने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा डैमेज आएगा जरूर, लेकिन वो रेंज अटैक नहीं है जिसके कारण टीम गॉडफादर वो इजीली इस लॉर्ड को डिफेंड कर लेगी। इस मिनियंस को जो इनहांस मिनियंस जो है वो आते हुए इजीली डिफेंड करते हुए दिखेंगे हमको। उनके पास अच्छा खासा एक लेन क्लियरेंस भी है, लेकिन यहाँ पर और एक एंगेज यहाँ पर बैक ऑफ करने की कोशिश, बट उनको चेज डाउन किया जाएगा। और ये स्वीट रिवेंज था यहाँ पर कियोशी की तरफ से, एंड साथ ही साथ यहाँ पर मार्क्स को भी निकाल दिया है। डबल सिक्योर किया इनटू द ट्रेड। नेक्सस गॉट एक्सपोज्ड फ्रॉम द मिड लेन। You can see that inhibitor falls down. Nexus exposed हो चुका है और अभी एक चांस है to finish up the game, but at the same time you're gonna see that Parsa coming in for the clearance. क्लियर कर देंगे। So just a cannon minion तो वो क्लियर होके ही रहेगा। That was absolutely indeed था ये चीज होने वाला है, बट यहाँ पे little bit of poke आ रहा है और बॉट से यहाँ पर मिनियन लाने की कोशिश। लास्ट इंसैनिटी टुवर्ड्स द बैकलाइन। फ्लिकर यहाँ पर, Oh my God! and Noisy goes down. Flicker coming in for the Paquito, but look at that beautiful trap down here. But somehow minions को फिर से यहाँ पर clear out करेंगे with the help of the feather air strike। फिर का अमर है नहीं, बट टॉप लेन पर भी क्लियरेंस यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। एकदम से एक झोंके पर ही सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर निकाल दिए। नॉक इन नो स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया वैलेंट गोल्स की तरफ से। आई विल डेफिनेटली से द वे वैलेंट गोल्स इज चैनलिंग द मैक्रो एनर्जी हियर फ्रॉम देयर साइड इज रियली वर्किंग सो वेल। एंड एक गलती मैं पकड़ूंगा फॉर गॉडफादर इज दैट ईशन शिन पिट के पास नहीं थे, ईशन शिन आगे नहीं गए थे, बट स्टिल दे लिटरली वेटेड फॉर द लॉर्ड, एंड दैट टू विद द पकीतो एंड यूडोरा। आप रिटेलिएट करके आप डिफेंड कर सकते थे अपने बेस को, कोशिश करते, क्योंकि आपके पास रेंज वाले हीरो है। ईशन शिन इज अ रेंज वाला हीरो एंड फार्सा इज द रेंज वाला हीरो। उनके डिफरेंस में तो आपके पास रेंज है, तो डेफिनेटली आप वो चीज ले सकते थे, लेकिन आप फाइट लिए और फाइट हारे वहां पे। इज लिटरली अ माइनस पॉइंट फॉर योर साइड। लॉर्ड फिर से मिलता हुआ यहाँ पर टीम वैलेंट गोल्स को, एंड देयर इज अ वे। शिंडा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन विद दिस लॉर्ड? विल दे डिफेंड और विल दे क्रैश आउट? थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है यहाँ पे एक्सबॉक्स का भी रहने वाला है। उनका इंसैनिटी जो पड़ता है और लाइक एओई पड़ता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे बना हुआ है ना इस समय गॉडफादर के लिए, वो एओई है। और यहाँ पे देखिए डैमेज आता हुआ दिखेगा। वेलकर एडिशन का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे रोकने का प्रयास, इंसैनिटी इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन रेंज में नहीं रहेंगे। पीछे से यहाँ पे ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल किया जरूर गया, लेकिन यहाँ पे हील आता हुआ दिखेगा। ओह माय गॉड, वेलकर यहाँ पे थोड़ा सा जो बच के हुए निकलना चाहती है, लेकिन पीछे से डैमेज आता हुआ कमाल का नहीं, वहां पे डैमेज देते हुए दिखेंगे। डोरा फिनिश ऑफ कर देगी और उसी के साथ एस्मरल्डा की तरफ जाते हुए स्टन आता हुआ दिखेगा डोरा की तरफ से। लॉर्ड आ चुके हैं, मिनियंस ऑलरेडी यहाँ पे इमोबिलाइज हो चुके हैं। लॉर्ड का आगमन अभी भी डिफेंड करने को रहता है, लेकिन वो टीम यहाँ पे एक और फाइट लेती हुई दिखेगी। इनहांस मिनियन ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर आगा अरमान यहाँ पर रहेगा जरूर इंसैनिटी इस्तेमाल करते हुए। फिर दोबारा से एक्सबॉक्स अंदर की तरफ घुसेंगे। मिनियंस को थोड़ा क्लियर आउट कर दिया गया है, कोशिश करना चाहते हैं डिफेंड करने के लिए, बहुत ही कम एचपी में बचते हुए निकलेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे एक्सबॉक्स को भी मौके का फायदा उठाते हुए डैमेज देते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पकीतो का कमाल का डिफेंड आता हुआ O2 गॉट कुक्ड और पीछे हटेगी टीम वैलेंट गूल्स। एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे कमाल का डिफेंड आता हुआ और उसी के साथ फ्रेया ने भाई जिस तरीके से वहां पे फाइट ली है,
कमाल की फाइट लेते हुए, कमाल का सस्टेन करता हुआ, अगर फ्रेया वहां पे वो रिस्क नहीं उठाती, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वो डिफेंड हो पाता। वो रिस्क उठाया, वो रिस्क यहाँ पे लिया और उसका फायदा बिल्कुल आता हुआ, लेकिन खतरे की घंटी अभी भी टली नहीं है। मौका एक और होने वाला है, टीम फाइट एक और यहाँ पे जल्दी होने वाली है। देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा ये चीज। ओके, फाइट फिर दोबारा से होती हुई जी, छोटा सा फाइट, वैल्क्री डिसेंट फिर से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर टिकट ने बहुत ही अच्छा पकड़ा। क्योशी गोज डाउन देयर, वैल्क्री डिसेंट से यहाँ पे टॉर्मेंट करने की पूरी कोशिश चल रही है। आर्ची गोज इन देयर, लेकिन स्टैन सीजी वो थोड़े से अंदर ज्यादा चले गए थे, जिसके कारण उनको यहाँ पर टेक डाउन किया गया। और ये देखिए पिक ऑफ यहाँ पर आता हुआ, बहुत ही खराब पोजीशन में यहाँ पर कॉट किया गया है एंड उसको टॉर्मेंट भी कर दिया जाएगा इजीली। मॉन्स्टर किल सिक्योर किया है, यहाँ पे छुपे हुए थे पैंटर, बट इतना ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगा नहीं उस छुपने पर। बट यहाँ पे मौका टू टेक डाउन द बेस, टू टेक डाउन द गेम। अब कीतो गोना कम इन फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द क्लियरेंस ऑफ द लेन एंड मौजूद है वो फेदर एयर स्ट्राइक, तो शायद से यहाँ पर इजीली डिफेंड हो सकता है। बट लुक एट द लास्ट इंसैनिटी, पकड़ने की कोशिश, यहाँ पर टेक डाउन करेंगे ईशन से स्ट्राइक टू टेक डाउन द मिनियंस। लॉक डाउन किया है यहाँ पर वो टर्टल्स बेस को एंड देयर यू गो गाइस। Even though there was a smell, there was a hope for the comeback, but उसको obviously execute करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था for Godfathers, and eventually Valiant Ghouls gonna take on another victory into their victory triumph at Algambo Esports MOBA Warmup Class Series. कमाल का गेम प्ले आता हुआ दोनों ही टीम की तरफ से। एक मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा गेम प्ले, दोनों को पता था कि अपने अपने प्लस पॉइंट कहाँ है और अपने अपना फायदा कहाँ पे है। पकीतो ने भी कोशिश करी वहां पे स्प्लिट पुश देने की, उनको भी पता कि ज्यादा फायदा होगा नहीं अगर टीम फाइट पे भी रहेंगे, क्योंकि एस्मेराल्डा ऐसा पिक था ना जो दोनों को काउंटर कर गया। अगर एस्मेराल्डा की जगह कोई दूसरा पिक होता, आई थिंक तब भी थोड़ा बहुत आपका जो है कैरी वगैरह हो जाता किसी भी तरीके से। लेकिन वो एस्मेराल्डा आया जहां पे आपके दो मेन डैमेज डीलर थे, जो मेन सस्टेन आपके करने वाले थे, जो शील्ड के भरोसे बैठे थे, आपकी वो शील्ड यहाँ पे चुरा ली। तो जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं आपका एक पूरी तरीके से बोल सकते हैं जो ड्राफ्ट है वो सैक्रिफाइस हो गया, आपका जो डैमेज था वो सैक्रिफाइस हो गया और आपको फिर पीछे हटना पड़ा। और यहीं से जो है पहला मैच वो आपके यहाँ से जाता हुआ गया। लेकिन दूसरा मैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है एसटीजी, और आई थिंक यहाँ पे थोड़े से ड्राफ्ट की तरफ जो है चेंजेस हमें जरूर आते हुए दिखेंगे इस बार। मे भी शायद गोल्ड लेन पे हमें गोल्ड लेन ही आता हुआ दिखे, या फिर मेरे को लग रहा है कि इस बार थोड़ी से हेरित के आने की संभावना पता नहीं कि मेरे को ऐसी लग रही है कि शायद हमें दिख सकता है अगर बैन नहीं हुआ तो। मे बी हेरित और क्लॉड, हाँ ये तो हीरो। मे बी हैरत हमें देखने को मिल सकता है, मे बी क्लॉड हमें देखने को मिल सकता है, फिर से फाइटर गोल्ड के साथ देखने को मिल सकता है हमें दोनों टीमों की तरफ से। बट एक चीज है कि एओई के हिसाब से आई विल से कि बीट किया है यहाँ पे वैलेंट गोल्स ने टीम गॉडफादर को। आप फारसा एंड ईशन के साथ गए थे, जिसके कारण जो है उनके पास एक अलग ऑप्शन था आप सभी के लिए, इरारा था। इरारा भी क्लोज रेंज था एंड हेल्प ज्यादा मुझे लगा कि हाइलॉस एंड फ्रेया की तरफ से, सॉरी नॉट फ्रेया बट हाइलॉस एंड एक्सबॉक्स की तरफ से ज्यादा आया, क्योंकि लास्ट इंसैनिटी जितना एओई कवर करता है उतना एओई में आप स्लो डाउन होते हो, सो डू दैट ग्लोरियस पाथवे। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिवनेस दिखाई फॉर वैलेंट गोल्स ड्राफ्ट एंड फॉर द विक्ट्री एज वेल। तो ये मैच थोड़ा सा तब्दील जरूर होगा, क्योंकि अगर सेम स्ट्रैटेजी के साथ फिर से जाएंगे तो फिर हो सकता है कि क्रैक कर दे टीम गॉडफादर उस स्ट्रैटेजी को। तो वैलेंट गोल्स व्हाट विल बी द थॉट फॉर दिस टाइम, ड्राफ्ट देख के पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वैलेंट गोल्स खेल रही है, जिस तरीके से हर एक गेम पे उनकी जीत दिख रही है हमें, क्या कोई टीम है जो इन्हें हरा पाएगा? क्या कोई टीम है जो इस मंथ पे वैलेंट गोल्स पे ऊपर भारी पड़ पाएगा? और ये यही चीज है कि लाइक और कुछ ही देर में हम लोग ड्राफ्ट के अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक छोटा सा सरप्राइज जो आपके लिए इस मैच के बाद है, या फिर इस मैच के नेक्स्ट मैच के बाद है, क्योंकि हो सकता है कि हम थर्ड गेम डिसाइडर देखें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वैलेंट गोल्स क्लीन स्वीप ही करेंगे, डेफिनेटली इट्स नॉट अ थिंग कि लाइक क्लीन स्वीप होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये हुई आप फॉर द ड्राफ्ट गाइस, टीम गॉडफादर इस बार रेड साइड पे रहेगी, टीम वैलेंट गोल्स इस बार ब्लू साइड पे रहेगी, एंड यू कैन सी दैट वैलेंट गोल्स के पास वो पहला
I am the power of light incarnate. बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा एसटीजी कि जैसे ये पिक्स हैं वो किस तरीके से चेंजेस आते हुए दिखेंगे, ड्राफ्ट के ऊपर किस तरीके से चेंजेस थोड़े से आते हुए दिखेंगे। जैसे कि आपने बोला कि वैलेंस गूल्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रही है, लाइक जिस तरीके से उनका इम्प्रूवमेंट आया है माइक्रो के ऊपर वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन आई थिंक कि हाँ, कुछ टीम्स है जो उनको अच्छा खासा बोल सकते हैं कि डैमेज दे मतलब अच्छा खासा एक टफ कंपटीशन दे सकती है। और आई थिंक गॉडफादर भी आज यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगी और आई थिंक वो और भी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट अगली बार लेते हुए अभी आती हुई दिखेगी, क्योंकि दूसरा मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और दूसरे मैच की बात करें तो यहीं से जो है आप बोल सकते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है हमको। लेकिन उससे पहले बैन्स की तरफ एक बार नजर डालना चाहेंगे, काजा को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। उसके साथ साथ बेट्रिक्स यहाँ पे बैन होती हुई दिखेंगी। बेट्रिक्स के साथ साथ अगर इडोरा इस बार बैन कर दिया गया है, ओके इडोरा बैन हुआ है, मे बी शायद लिंक का आगमन हो सकता है। अगर लिंक नहीं आते हैं तो मे बी शायद फिर दोबारा से हिरारा के साथ जाते हुए दिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस बार टीम गॉडफादर ने बोला नहीं, हिरारा नहीं देंगे आपको, हिरारा बैन कर दिया है। उसके साथ साथ तीसरा बैन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा टीम गॉडफादर की तरफ से, वो रहेगा मार्शल। बहुत बढ़िया, देखते कोशिश तो अच्छे खासा चल रहा है यहाँ पर, बट राइट नाउ एक चीज हो सकता है कि शिना मतलब जिस तरीके से यहाँ पर टीम वैलेंट गोल्स की तरफ से बैन्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली रेस्पेक्ट दे रहे हैं कुछ चीजों को, बट नॉट ऑल द टैंक्स। लास्ट टाइम जैसे उन्होंने सारे टैंक्स ऑप्शन को कॉर्नर करवाया था एंड जिसके कारण हमने एक टाइग्रल पिक देखने को मिला था टीम गॉडफादर की तरफ से, वैसा सीन नहीं है। अच्छा ठीक है, starting made 2 damage, Lilia into the hand of Team Valiant Goals. Team Godfathers, what they will go for? God खुला है यहाँ पर, God जा सकते हैं। Atlas is also not open, sorry. Belleric is open, so Belleric और God ये क्या दो पिक बन सकते हैं यहाँ पर टीम Godfathers की? अगर नहीं फिर क्या? Drafts into the देखा EXP? जाए बिल्कुल देखा जाए ना, आज थोड़ा सा रफ भी आया था गॉड के ऊपर, तो आई डोंट थिंक कि गॉड यहाँ पे आज लेते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी गॉड की बात की जाए तो नर्फ आया उनके ऊपर, अर्ली गेम उनका थोड़ा सा डैमेज जो है कम किया गया है, जिसके कारण जो पहले जैसा पोक मिलता था ना वो अब थोड़ा सा कम कर दिया है। और अर्ली गेम पे लाइक उनका जो डोमिनेंस था से मिड गेम पे वो जरूर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। लेट गेम में बराबर वहां पे रहेगा डैमेज, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वहां पे गॉड अल्टीमेट लगाएंगे तो वो हीलिंग इन्हें अपनी जगह से और एक वर्नेबल पॉइंट बन सकता है। बराट से यहाँ पे एक अच्छा पिक मैं बोलूंगा, इस समय जैसे मेटा पे चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लापू लापू का आगमन हुआ है, लापू लापू इज ऑल्सो गुड और वो अच्छी तरीके से स्ट्रेन करेंगे उनको। जो बोल सकते हैं कि डैमेज रिडक्शन जो मिलता है उनकी सेकंड स्किल से लापू लापू की। सबसे बड़ी गलती मैं देखता हूँ कि लापू लापू के साथ लोग पता क्या करते हैं एसटीजी, वो अपना सेकंड स्किल यूं ही वेस्ट कर देते हैं। और जबकि उनको सेकंड स्किल का मतलब जो पैसिव है बेसिकली उनका ये कि आप जितने ज्यादा बंदों के ऊपर सेकंड स्किल को यूज करोगे आपको उतना ज्यादा यहाँ पे डैमेज रिडक्शन मिलेगा। अप टू 35% आपको डैमेज रिडक्शन मिलता है लापू लापू की सेकंड स्किल से जब अपने अल्टीमेट फॉर्म में होते हैं। उसके साथ अगर आप उसको कंबाइन कर दो क्वीन विंग्स के साथ, भाई वो अनकिलेबल बन जाता है उस समय जब क्वीन विंग्स का भी पैसिव हो। तो उसके समय तो अगर जिस तरीके से यहाँ पे आता हुआ दिखेगा तो वो कमाल का रहने वाला है। सस्टेन तो ऑलरेडी कमाल का रहेगा। कार्मिला का आगमन भी बहुत अच्छा खासा है। लिलिया का जो डैमेज है वो बहुत अच्छी तरीके से आप बोल सकते हैं कि कर्स ब्लड के साथ यहाँ पे लगता हुआ दिखेगा। तो वेलेंट गूल्स ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर रही है। और उनके जो 3 पिक्स होते हैं ना हमेशा उनके ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो हमेशा वो या तो एओई और सस्टेन और बोलिए ये रोम के साथ ये हमेशा 3 पिक आते हुए दिखते हैं। और पहले से ये 3 कड़ी जब आपकी मजबूत हो जाती है तो पीछे से फिर आपके जो है हाइपर और एमएम इन दोनों के बीच में जो है ये फ्लक्चुएट करते हुए दिखते हैं कि किस तरीके से जो है फ्लेक्सिबल पिक इन दोनों के पास रहे। तो इस बार देखते हैं किस तरीके से आता हुआ दिखेगा। मिनोटोर का आगमन होगा, मिनोटोर वंस अगेन नाइस चॉइस, थोड़ा सा हील मिलेगा अच्छा खासा यहाँ पे। तो गॉड को भी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं आप इजीली। लेकिन कार्मिला सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बनने वाली है कि वो बहुत ज्यादा अंदर जाती हुई दिखेगी, बहुत ज्यादा सस्टेन करती हुई दिखेगी। उसके साथ साथ एक उसका अल्टीमेट और लिलिया का डैमेज वो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा आपके लिए फ्रंट लेनर्स के लिए जो फ्रंट लेन करते हुए दिखेंगे। Definitely. Minotaur, and then you saw the Hanabi coming into the hand of Team Godfathers. Last 2 picks about to barge into the lineup down for Valiant Goals here. Carmela गए तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे जो उसके साथ अच्छा बैठे into the jungle.
तो क्या हो सकता है वो? गॉड की बात मैंने करी थी, गॉड आया है यहाँ पर। अच्छा ये मस्त देखिए, यही मैंने बोला था, दोनों पिक्स यहाँ पर कैरमिला के साथ कॉम्बाइंड हो रहे हैं, द एरेथल एज वेल एज द जॉय। अच्छी खासी दो पिक्स यहाँ पर एंड उसके काउंटर करने के लिए कुछ पिक्स आपके पास पहले से ही मौजूद नहीं है, बिकॉज यू नीड अ पिक ऑफ एंड यू डिड नॉट गो फॉर अ पिक ऑफ। अगर मिनोटॉर थोड़ा लेट आने वाला था तो ज्यादा अच्छा रहता, चाव जा सकते थे यहाँ पर आप, और वो चाव बहुत अच्छा साबित होता है यहाँ पे जॉय एंड इरेथल को मार्क डाउन करने के लिए। बस फाइन, लेट्स सी हाउ दिस नोलन इज गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर द साइड ऑफ टीम गॉडफादर्स हियर, क्योंकि ये मौका है, इबादत है, तो कोशिश रहेगी टू टेक डाउन द गेम फॉर गॉडफादर्स, क्योंकि इनका डू और डाई गेम है। मैच पॉइंट तो वैलेंट गोल्स का रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहला मैच जीता है क्लीन एंड फेयर। देखते हैं, second game is here, guys, and we'll be entering into the land of dawn soon, and this will be a do or die for Godfather. अगर हारते हैं तो फिर सीरीज क्लिंच करेगी वैलेंट गोल्स before the last day for the scrim and before the second last day, you can say, for the clash of starlight. बिल्कुल, और इसी के साथ जो टीम्स है वो भी रेडी होती हुई हमें देख चुकी है। दोनों ही टीम के ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो अच्छे ड्राफ्ट है, बट थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी, जैसे कि मैंने कहा था, मीज को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा संभल के रखनी पड़ेगी। बराट जरूर मौजूदा रहेंगे वहां पे, अपना अल्टीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉय को पकड़ सकते हैं अगर जॉय यहाँ पे अंदर की तरफ चार्जिंग करते हुए दिखते हैं, बट लेट्स सी कि बराट का अल्टीमेट कब तक यहाँ पे रहेगा उधर। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीम वैलेंट गोल्स की, तो इस समय जिस तरीके से बोल सकते हैं कि ड्राफ्ट उनकी तरफ से है ना, वो भी बहुत अच्छा है। एवी भरपूर रहेगा उनकी तरफ से, डैमेज भरपूर रहने वाला है। योशी जॉय काफी समय के बाद में बोलूंगा यहाँ पे आती हुई हमें दिख रही है, और आई थिंक डेब्यू भी जब हुआ था टीम वैलियंट गोल्स का, तो फर्स्ट मैच में आई थिंक वो जॉय के साथ ही हुआ था। तो इट्स नाइस टू सी जॉय जो है वो फिर से आती हुई दिखेंगे क्योशी के हाथ में। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे बन रही है, एसटीजी क्या लगता है पहला किल किसके हाथों में लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा वो पहला किल? मुझे लग रहा है इट शुड बी द जॉय, बट उनके ऊपर यहाँ पर इन्वेड होने का वो कोशिश करती हुई टीम गॉडफादर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम आई थिंक पहला वो मिल जाएगा जल्दी। आई वाज थिंकिंग कि नहीं भाई, टर्टल से पहले नहीं मिलेगा, बट लिटरली एक मतलब ब्रेव अप्रोच यहाँ पर टीम वैलेंट गोल्स की तरफ से। भापा उस चीज को, उनको पता था कि टैंक जो है वो मिड लेन की तरफ ही रहेंगे, थोड़ा सा इन्वेड या विजन वहां पे देते हुए दिखेंगे, तो मौके का फायदा उठाया, सीधा सीधा गए हनाबी के ऊपर और उनके ऊपर प्रहार करते हुए दिखे, तो पहला खेल वहां पे मिलेगा, जिसके कारण एमएम आराम से पीछे रह के यहाँ पे खेल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी साइड की बात करें टीम गॉडफादर की तरफ से, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जो रोटेशन है ना वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ कि कहाँ पे आपको बेसिकली जाना है, क्योंकि आप गोल्ड लेन की तरफ अगर आते हुए देखेंगे, अभी तक आप गए नहीं हो, मिडिल लेन पे ही घूम रहे हो, बॉटम लेन पे गए थे लेकिन आधे रास्ते से वहां पे वापस आ गए हो, फिर दोबारा से दिक्कत हो सकती है। एमएम वहां पे मौजूदा रहेंगे, पीछे से कियोशी उनका भी आगमन हो चुका है, और उसी के साथ जॉय आते हुए दिखेंगे, इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स टावर के अंदर जाने का प्रयास, लेकिन पीछे हटेंगे, और उसी के साथ फ्रैक्चर लगाते हुए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, डैमेज देते हुए दिखेंगे, मेज के ऊपर प्रहार होता हुआ, लेकिन बचेंगे इस समय मुश्किल घड़ी में, पीछे हटे। टर्टल का आगमन हो चुका है, टीम जो है टर्टल के लिए आना चाहती है, लेकिन यहाँ पे कियोशी उनकी एचपी नहीं है, तो उनको हील करके आना पड़ेगा, और ये अच्छा मौका रहेगा टीम गॉडफादर के लिए टर्टल लेने का, और मौके का फायदा उठाते हुए नॉइजी वो टर्टल जो है लेते हुए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया 2-0 from Valiant Goals with a turtle into the hand। अच्छी खासी यहाँ पर स्टार्टिंग मिली थी, लेकिन टर्टल चला गया नॉइजी के हाथों में, दैट्स व्हाई वो हो सकता था कि टर्टल इनटू द हैंड में बोलूं, बट आई कांट। बट कोई बात नहीं, टर्टल नहीं भी मिला तो इतना ज्यादा उसके ऊपर फर्स करने की जरूरत भी नहीं है। ओह, लिटिल बिट ऑफ पोक, लिटिल बिट ऑफ डैमेज कमिंग आउट फ्रॉम द हैनाबी हियर। लेट गेम अगर जाता है तो फिर ऑब्वियसली गॉडफादर के पास बहुत अच्छा चांस रहेगा। फ्लिक का यहाँ पर बेट हुआ है, और साथ ही साथ किल भी यहाँ पर मिलेगा, एंड ऑन टू द टॉप साइड क्रॉस मैप प्ले वहां पर सिक्योर किया एक और किल, द फर्स्ट किल फॉर द साइड ऑफ टीम गॉडफादर, बट इस मैच का चौथा किल था ये, एंड दैट वाज अ 1-for-1 ट्रेड। मिड लेन पे तुरंत यहाँ पर रोटेशन करते हुए टॉप लेन पे यहाँ पर फॉलो अप देने की कोशिश, अंदर यहाँ पे जोन आउट करेंगे मीनो,
थोड़ी सी दिक्कत रहेगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्लो डाउन है और लिलिया का जो डैमेज है लगातार आप नोटिस करेंगे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। अभी आइटमाइजेशन कंप्लीट भी नहीं हुए, एक सिंगल आइटमाइजेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे जैसे आगे आइटमाइजेशन आएगा तो लिलिया का डैमेज और ज्यादा आएगा। मिनोटॉर यहाँ पे और ज्यादा सस्टेन और मुश्किल रहेगा उनके लिए, क्योंकि एक बार चार्जिंग करते हैं मीनो तो लाइक उनके पास एक फ्लिकर ही रहेगा बाहर निकलने के लिए, और फ्लिकर अगर नहीं लगा दिक्कत हो सकती है। लेकिन उससे पहले कार्मिला यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे, स्टन का प्रयोग किया है लेकिन वो ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए निकल जाएंगे उधर पीछे हटते हुए। नॉइजी उनके ऊपर हार होना चाहते हैं, कोशिश रहेगी लेकिन पीछे हटे हैं। ओटू उनके ऊपर प्रहार आता हुआ मिस्टिकस का इस्तेमाल किया था लेकिन पीछे हटे हैं। यहाँ पे कार्मिला दिक्कत में पड़ सकती है, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है, कर्स ब्लड का इस्तेमाल, कोशिश रहेगी पीछे डैमेज देते हुए लेकिन बहुत ही कम है, फंसते हुए निकल जाएंगे। ट्रिपल किल मिलेगा यहाँ पे एमएम को, मैनियक लेने का प्रयास पूरी कोशिश की जाएगी और मैनियक फाइनली टीम गॉडफादर, और इस समय उनकी तरफ से परफेक्ट रिटेलिएशन आता हुआ। गलती हुई टीम वैलियंट गोल की तरफ से, थोड़ा अंदर गए, वहां पे पकड़ने का प्रयास किया, गलत पोजीशन में फंसे जिसके कारण वहां पे वो किल मिला। और ये देखिए जिस तरीके से डैमेज आता हुआ गया एमएम का, बहुत ही कम एचपी पे ट्रिपल किल मिला, वहां पे गायब कर दिया एक के बाद एक। और ये अच्छी शुरुआत हनाबी को, जो स्नोबॉल चाहिए था स्टार्टिंग में वो यहाँ पे दे बैठे हैं गॉडफादर। उनकी शुरुआत हो चुकी है, अच्छे दिन फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन देखना पड़ेगा ये अच्छे दिन कितने देर तक चलेंगे। हनाबी को अगर लेट गेम तक स्पाइक ऐसे मिलता रहा देन कोशिश चाहे जितने भी कर ले वैलेंट गोल्स जीतना मुश्किल हो जाएगा उनको। अभी कहीं ना कहीं हनाबी को मार्क डाउन करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, बट उससे पहले एक छोटा सा इस्तेमाल यहाँ पर जोन करने का। प्लस मिस्टिक गश यहाँ पर 4 चीजें एक साथ, गामना से वो स्टन, मिस्टिक प्रोजेक्टाइल से वो स्टन और तुरंत वहां पर बर्स्ट आता हुआ विद द हेल्प ऑफ मिस्टिक गश सिक्योर किया O2 गॉड कुक को। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रिदम ऑफ जॉय विद इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स कमिंग इनटू द वे बट ब्यूटीफुल एस्केप बीइंग डन बाय द नोलन विद हेल्प ऑफ द डाइवर्जन। यहाँ पर रिट्रीट किया है बेस की तरफ, एक अच्छा स्टार्ट आप बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला खुशी के दिन, अच्छे दिन शुरुआत हो चुकी है गॉडफादर के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये डू और डाई गेम है। यहाँ पर अगर वो जीत जाते हैं तो फिर इस मैच को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द थर्ड डिसाइडर, एंड तब आप कह सकते हैं कि हाँ हमने आखिरी वक्त तक लड़ा है, आखिरी मोमेंट तक अपना ताकत झोंका है। हार गए लेकिन थर्ड गेम तक लिया है मैच को, बट यहाँ पे कर्स ऑफ ब्लड वो भी लगा था लेकिन वो जस्ट हैपन ऑफ कैम किल यहाँ पर मिलता हुआ। यू कैन सी दैट वे जॉय गोज इन फॉर द इलेक्ट्रीफाइंग बेस, गॉट अ किल देयर एज वेल, एंड नीचली भाग पर लिटिल बिट ऑफ यू नो वहां पर झोंका झोंकी फ्रॉम बरास एंड वो दोनों लगे हुए हैं भाई, वो ना एक दूसरे को किसी लेन पे रोटेट करने देंगे ना वो खुद जो है आपस में ही लड़ते रहेंगे, डैमेज देते रहेंगे, कील करते रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए O2, मैन O2 गेटिंग कुक्ड राइट नाउ बहुत समय से। लाइक अभी देखा जाए तो इस गेम में बार बार उनको ही टारगेट किया जा रहा है। 0-3-0 यहाँ पे स्कोर के साथ चल रहे हैं अभी, और डैमेज देने का प्रयास किया जाएगा। मियोनो बहुत ही कम एचपी पे बचते हुए जाएंगे, लेकिन हील वो देखिए कितना ज्यादा हील आया, सीधा 30% से 60%। ये देखिए कमाल का हील आता हुआ मिनोटॉर का, इस समय एंटी हील की आवश्यकता पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोशिश रहेगी, एंटी अभी तक बनाया नहीं, एक बार आइटमाइजेशन की तरफ नजर डालना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले फाइट जो है वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी। लिलिया वहां पे मौजूद है, डैमेज देते हुए देखेंगे। O2 ने यहाँ पे टरेट वो डिस्ट्रॉय कर दी है, आई थिंक वहां पे वो डिस्ट्रॉय हुआ था या किल हुआ था, आई डोंट नो। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया है लेकिन यहाँ पे मीनो का कमाल का अल्टीमेट लगेगा, लापो लापो मौजूदा है लेकिन कियोशी वो किल लेते हुए जाएंगे। कसबल का इस्तेमाल किया है, पेट्रीफाई फॉलो अप नहीं है लेकिन पीछे हटी है टीम। उसी के साथ मिड का टरेट जरूर टूटा है लेकिन टॉप का टरेट वो भी टूटेगा हनाबी के द्वारा। और बढ़िया यहाँ पे क्रॉस प्ले किया, टॉप के बदले मिड दे दिया, लेकिन अगेन मिड का टरेट मैं कहूंगा ज्यादा बोल सकते हैं कि आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि जंगल एक्सपेंशन हो जाता है आपको उसके कारण। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी भी स्थिति यहाँ पे वैसे ही चल रही है। ये एक्सपी दोनों के दोनों अभी भी आपस में ही लगे हुए हैं, उनको रोटेट करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी साइड से देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिक्कत है, पड़ सकते हैं मेज फ्लिकर का इस्तेमाल किया है मिस्टिकस लेकिन नाकामयाब, किलिंग स्प्री लेते हुए जाएंगे, गलत पोजीशन में फंसे वहां पे। एमएम मौजूदा है, टैंक का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से आएंगे। चलिए पीछे हटे इस समय, वैलियंट गूंस ने उस चीज को परखा कि आगे जाके फाइट नहीं ले सकते, अगर किसी को ऑफ पोजीशन पकड़ा तो वहां पे फायदा मिलेगा।
और वहीं पे मेज जो है वहां पे गलत पोजीशन पर है, जिसके कारण उनको वहां पे फायदा मिला। पीछे से आते हुए दिखेंगे कार्मिला मौजूदा है, डैमेज अच्छा खासा देते हुए दिखेंगे। बराट सस्टेन करने का प्रयास किया है, लेकिन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पे दिक्कत देते हुए दिखेंगे। ब्लेज फाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखे हैं। मीनो रेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। ओटू के ऊपर प्रहार बहुत ही कम एचपी में बचते हुए निकलेंगे, लेकिन पीछे से डैमेज आता हुआ दिखा है। ओ लापू मौजूदा है, फिनिश ऑफ करेंगे यहाँ पे लेजेंडरी पैंथर, उनको धराशायी कर दिया जाएगा। और उसी के साथ एक बढ़िया शुरुआत टीम वेलियंट गोल फिर दोबारा से पकड़ बनाती हुई बॉटम का जो टरेट है वो लेने का प्रयास करते हुए जाएंगे। कार्मिला वहां पे मौजूदा है। जिस तरीके से फाइट यहाँ पे जा रही है, और आप देखेंगे जिस तरीके से वेलियंट गोल्स वो जिस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं भाई, वो काफी अच्छा मेरे को देखने में लगा। डेफिनेटली वहां पर सिर्फ फाइट पे किल्स नहीं बल्कि मैक्रो पे भी इजाफा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिक्योर किया बॉट लेन के टियर 1 को वहां पर डिस्ट्रॉय किया। अभी तक बराज गार्ड कर रहे थे, पर तुरंत यहाँ पर जब वो मिनोयन फ्यूरी खत्म हुआ उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स, हेवी क्रॉसबो एज वेल एज ब्रेवेस्ट फाइटर टू मेक श्योर कि 2 ट्रेड यहाँ पर उन्हें मिले। उसके बाद तीसरा ट्रेड एज अ बॉट टियर 1 वो मिला यहाँ पे लॉर्ड के पास। यहाँ पर कोशिश थी लॉर्ड को जोन आउट करने की, नोलान आएंगे बट आई डोंट थिंक कि लॉर्ड यहाँ पर कंटेस्ट करने को चांसेस मिलेगी टुवर्ड्स द गॉडफादर टीम, क्योंकि द वे कार्मिला एंड लीलिया इज जोनिंग आउट हियर, इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से कोशिश इलेक्ट्रीफाइंग बीट, दैट विल बी अ मेगा किल ऑन टू द एनिमी, couldn't सर्वाइव। वो 2 गॉट कुक्ड, आगे नहीं आए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टैंस इजी वो यहाँ पर चलते बन गए। O2 आ गए अभी, and O2 gonna get the Lord as easy as possible for his team। और इस बार भी Valiant Ghouls के पास वो Lord, वो मैक्रो का इजाफा रह रहा है, जिसके कारण आगे दिक्कत हो सकती है towards the Godfather। और ये देखिए आगे बढ़ते हुए यही चीज है, आपके पास पिक ऑफ नहीं है, आपके पास यहाँ पर जॉय को रोकने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है अलग, सिर्फ जो है गॉड के पास वो मिस्टिक प्रोजेक्टाइल है, लेकिन उसका इफेक्ट जब खत्म होगा फिर जॉय फिर से डांस कर सकता है। That's the reason I told you कि थोड़ा अर्ली मिनो पिक था, वो असैसिन आया नहीं था और आपने मिनो ट्रप पिक किया था। ये देखिए फिर से इलेक्ट्रीफाइंग बीस्ट का इस्तेमाल, बराज को यहाँ पर ट्रैप डाउन करती हुई टीम वैलियंट गोल्स gonna get the kill as easy as possible। लॉर्ड मिड से मार्च करेगी एंड कहीं ना कहीं मिड की टियर 2 और बॉट की टियर 2 पे आके मलती हुई टीम वैलियंट गोल्स। उसी के साथ कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं, हना भी थोड़ा सा सफर करती हुई जा रही है। अर्ली में थोड़ा सा वो स्टार्ट जरूर मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ दिख रहा है। कोशिश आती हुई दिखेगी और पीछे से O2 वो मौजूदा थे, अल्टीमेट का इस्तेमाल कर दिया, हैवी क्रॉसबो आता हुआ दिखेगा, फ्रैक्चर का इस्तेमाल करेंगे नोलन की तरफ से, बहुत ही कम एचपी में बचते हुए दिखे। उसी के साथ कर्ज ब्लड लगाया, जरूर फायदा होगा नहीं, पीछे हटे, लेकिन जो होली शील्ड थी वो यहाँ पे टूट चुकी है। तो आप प्लेन की तरफ नजर डालना चाहेंगे, अनाबी के ऊपर प्रहार होता हुआ दिख रहा है इस समय। ओके पीछे हटे हैं, इनहांस मिनियन मौजूद रहेंगे यहाँ पे, कैनन मिनियन पीछे हटे हैं। इसी के साथ अच्छा खासा डिफेंड में बोलूंगा। चलिए इन्वर्टेड टरेट अभी भी मौजूदा रहेगा, तो बोल सकते हैं कि अभी भी स्थिति ज्यादा खराब हुई नहीं है। हनाबी एक अच्छा खासा एक अगर अच्छा अल्टीमेट लगता है तो हनाबी का वो डैमेज है वो लेट गेम में थोड़ा सा स्पाइक कर सकता है, जो अच्छे खासे टैंक को भी मेल डाउन कर देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल डाउन करते हुए दिखेंगे। चलिए एंटी हील यहाँ पे लग चुका है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो अच्छे पिक्स, अच्छे आइटमाइजेशन यहाँ पे कर्जरी फ्यूरी बनाते हुए दिखे हैं, स्क्लॉ यहाँ पे बना है। और आई थिंक अब O2 जो है वो जाते हुए दिखेंगे मेलेफिक गन के साथ, जो रेंज उनको प्रदान करेगा वो पेनिट्रेशन फिर मिलेगा, जिसके कारण बराट्स और टैंक दोनों को अच्छा खासा डैमेज होने लगेगा। फिर देखते हैं, फिलहाल के लिए जो बात मैंने करी थी कि टियर 2 के ऊपर आंखें रखी है एंड टियर 2 को सिक्योर करेगी, तो अभी सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटर्स बचा है विदाउट द होली शील्ड्स। एंड डेफिनेटली 12 मिनट का समय पास्ट हो चुका है, तो मौका है स्लॉट के साथ खत्म करने का फॉर द Valiant Ghouls का डैमेज कमिंग इन देयर। पीछे से O2 यहां पर हेवी क्रॉसबो के साथ आगे बढ़ते हुए अनस्टेबल स्कोर करेंगे। कियोशी पे यहां पर उनको मिलता हुआ सेंसीजी की तरफ से, और कहीं ना कहीं डबल यहां पर किक सकते हैं, बट प्रीवियस फाइट के साथ यहां पर री-एंगेज करते हुए ओह माय गॉड ट्रिपल ट्रेड, जस्ट द बराट्स फॉलिंग इन देयर। O2 वन शॉट अवे टू गेट द डबल एंड ही गोना गेट इट इनटू द मार्क। सिर्फ गॉड यहां पर बचे हैं, कैनन मिनियन अंदर जाती हुई, क्या गॉड यहां पर डिफेंड कर पाएंगे? एंड यू आर गोना यूज द मिस्टिक प्रोजेक्टाइल देयर, और छोटा सा स्टन वहां पे मिला जरूर, लेकिन लॉर्ड यहाँ आ चुका है, गॉड अकेले खड़े हैं। आई नो कि लॉर्ड शायद से नहीं जाएंगी टीम यहाँ पर टेक डाउन करने के लिए, जा भी सकती है। जॉय आने वाले हैं और अभी तक रिसरेक्शन हुआ नहीं है,
किसी का फ्रॉम द साइड ऑफ टीम गॉडफादर, तो या लॉर्ड हो सकता है। बिल्कुल, वहां पे हनाबी बच गई थी, लेकिन लापू लापू यानी कि आर्ची वो गए खुद को सैक्रिफाइस करते। उन्हें पता था कि यहाँ पे हनाबी को निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छी कोशिश है। देखिए यहाँ पे गस ब्लड आता हुआ दिखेगा। मिस्ट्री गस का इस्तेमाल की जरूर बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। मिनो रेंज भी अच्छा खासा लगा था, डैमेज देते हुए दिखे। और ये देखिए हनाबी पीछे से आ रही थी, डैमेज लगातार देती हुई गई है। लापू लापू देखिए अंदर की तरफ गए, खुद को सैक्रिफाइस किया, लेकिन हनाबी को उठाते हुए लेके गए। वो जरूरी था वहां पे हनाबी को शट डाउन देना, और उसमें वो कामयाब रहे। पीछे से O2 आए, फिर डबल के लिए उन्होंने लिया। उसी के साथ अब लॉर्ड का भी आगमन वो भी हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे टीम वाली Ghouls उनकी तरफ से लॉर्ड का आगमन होगा। मिड लेन से यहाँ पे लॉर्ड आने वाले, और मिड लेन से यहाँ पे डिफेंड करना और ज्यादा मुश्किल रहता है। ये देख सकते हैं कि मिनियन क्लियर डाउन हो चुके हैं। टॉप लेन पे या कोशिश बट O2 got cooked, he got cooked there, and we can see the Mino and Fury coming into the way as well. एक बंदा डाउन है, लॉर्ड आ रहा है आपके पास, तो आप आउट नंबर तो रहोगे, बट लेट्स सी गाइस व्हाट विल बी हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि सस्टेन तो है टीम गॉडफादर के पास, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिफेंड हो सकता है ये लॉर्ड इजीली, क्योंकि O2 नहीं है। O2 होते तो शायद से चीजें कुछ अलग रहती, या फिर कुछ पिक ऑफ रहता है यहाँ पर क्लास जैसा, तो और भी कुछ अलग चीजें रहती वैलेंट गोल्स के पास, बट नॉट एट दिस पॉइंट। सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही मिला है टॉप लेन पे, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जैक्टली और यहाँ पे बहुत, मैं बोलूंगा O2 को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। अपनी पोजीशन जो है उनको हमेशा पीछे रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आप जो है लेट लास्ट में जब डैमेज देने आएंगे, जब सारी यूटिलिटी वगैरह यूज हो जाएंगी, अगर आप पहले ही यहाँ पे दारशय हो जाएंगे तो फिर लॉर्ड भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और इस लॉर्ड के कारण पता है क्या दिक्कत होगा, हनाबी को फार्म मिलेगा, क्योंकि 9 मिलियन वो मारती हुई जाएंगे। और देखिए हनाबी का फार्म यहाँ पे रोज गोल्ड आखिरी आइटम बनता हुआ दिख रहा है। रोज गोल्ड जैसी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो हनाबी अच्छा खासा डैमेज देती हुई दिखेगी। और O2 यहाँ पे देखिए नजरें घुमाइए हनाबी के फार्म के ऊपर, O2 से ज्यादा फार्म है उनका अभी इस समय। डेफिनेटली 70 सेकंड लॉर्ड के लिए, एंड हनाबी का O2 से ज्यादा फार्म। ये दिखाता है कि लाइक अगर एक अच्छा सक्सेसफुल गैंग होता है ऑन टू वैलेंट गोल्स, तो देयर इज अ चांस फॉर द कमबैक फॉर द गॉडफादर। और यहाँ पे मिनो एंड फ्यूरी मिस्टिक गस पीछे से यहाँ पर आता हुआ, लेकिन यहाँ पर स्पेन करेंगे मौके इसको वाइड डाउन। लुक एट इट, HP gonna go in for the noisy as well. Kyoshi falls down. My God. They're gonna pick down legendary Panther from the Lad of Dawn. Minion की टोली अंदर जाती हुई. You don't have the ultimates to secure the minion waves here. लॉकडाउन करते हुए इस बेस को कर्सर ब्लड का इस्तेमाल, लवरार्ट्स इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, और उसी के साथ क्राउन पॉप अप हुआ है। क्लीन स्वीप करेगी वैलेंट गोल्स टू रजिस्टर अनदर विन फॉर दैट साइड एट अलगैम्बो मोबा वार्म अप क्लास सीरीज। डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ अ काइंड फॉर वैलेंट गोल्स, क्योंकि वो रूथलेसली डोमिनेट कर रहे हैं इस पूरे स्क्रीम क्लैश को, एंड ये दिखाता है कि कितना ज्यादा वो लोग प्रिपेयर है फॉर द क्लास ऑफ स्टारलाइट, for the future events of Algambo Esports, for the future events of MOBA 5v5 community tournaments. एग्जैक्टली कमाल का वो फाइट यहाँ पे होता हुआ, लापू लापू की तरफ से पीछे से टेंशन आया, कमाल का यहाँ पे डैमेज आता हुआ। उसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है, वो वेव जो है पूरी तरीके से आती हुई दिखी थी। उसी के साथ विक्ट्री हासिल करते हुए टीम वैलेंट गोल 0-2 के साथ यहाँ पे जो है इस मैच को फिनिश ऑफ करते हुए जाएंगी बेस्ट ऑफ 3 की सीरीज को जीतते हुए आगे बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छा खासा, लेकिन गॉडफादर उनकी तरफ से भी अच्छा खासा गेम आया। थोड़ा सा इधर उधर हुआ जरूर था, लेकिन जरूर सीख के जरूर गए होंगे आज। उनको लाइक चीजों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, वो पॉइंट जरूर आज मिलेंगे। और अच्छा रहता है जब ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जब मैचेस आपको सिखा के जाते हैं, तो वहां से बहुत चीजें सीखने को मिलती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, स्क्रीम्स में जो है जीतना या हारना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उससे आप कितना सीखते हो, कितना इंप्रूवमेंट लेके आते हो, वो मैटर करता है इस चीज। वो तो है, एंड आप देख सकते हैं कि लाइक स्टार्ट अच्छी हुई थी। हैनवी को वो मैनियक मिला था, हैनवी के पास वो स्नोबॉल था, लेकिन उसके बाद उस स्नोबॉल को कन्वर्ट करना था आपको फिनिशिंग में, जो वो नहीं कर पाए, जिसके कारण आप देख सकते हैं वैलेंट गोल्स ने रजिस्टर की और एक क्लीन स्वीप यहाँ पर अलगैम्बो मोबा स्पोर्ट्स वार्म अप क्लास सीरीज में। डेफिनेटली लाइक कोशिश रंग दिलाती है, लेकिन अगर आप सही से करो तो, बट कोई बात नहीं। And the reason we are here, हम लोग अभी तक end नहीं किए, because we are going to have the Yes. surprise for the viewers. हम रिवील करने वाले हैं ब्रैकेट ऑफ Let's मोबा go. वार्म अप क्लास सीरीज के बाद जो होने वाला है नेक्स्ट वीक, दैट इज द क्लैश ऑफ स्टारलाइट। आर यू ऑल रेडी फॉर इट गाइस? क्योंकि हम अभी दिखाने वाले हैं कौन सी टीम किस टीम के साथ लड़ने वाली है वो 6 सुनहरे स्टारलाइट के लिए, एंड उसी ब्रैकेट को फिर आगे बढ़ाया जाएगा।
डे आफ्टर डे, 4 दिन का ये टूर्नामेंट। बिल्कुल रेडी है हम लोग भी और दर्शक गण वो लोग भी रेडी हो जाइए फटाफट से। टीम्स को फटाफट से जो है भाई शेयर वगैरह कर दो, अपनी टीम्स को बोल दो कि भाई ब्रैकेट रिवील्स होने वाले, आ जाओ फटाफट देख लो कौन किसके अगेंस्ट में है। और चलिए एसटीजी 10 का काउंटडाउन करते हैं, फिर उसके बाद जो है रिवील करेंगे ये ब्रैकेट। ओके लेट्स स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो Algambo Esports। फ्लैश ऑफ स्टारलाइट ये देखिए आ रहा है, सामने आ चुका है। एंड जो भाई एक्सोर्सिस्ट इवेंट तो आया नहीं, लेकिन एक्सोर्सिस्ट का गुरा जरूर आ गई अपने सामने। यहाँ पे ब्रैकेट आप देख सकते हो गाइस, द टॉप 18 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, वी हैव अ ग्रैंड फाइनल। इट्स नॉट डबल एलिमिनेशन, फुल ऑन नॉकआउट। कौन सी टीम किस टीम के साथ लड़ेगी वो देखने लायक है। सारी टीम्स आप देख सकते हो, स्टार पॉइंट एंड देयर इज another team that is Mavericks Esports. We have Zenith, QE Zenith. We got our hand on to Valiant. पहला मैच किसके साथ होने वाला है? Let's see. Oh Nebula, okay. QE Nebula, क्योंकि तीनों फ्रेंचाइजी खेल रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो तो और भी मजा आने वाला है। टीम Mavericks ये भी रेडी है गाइस, as well as look at it. और ये रॉयल्स, ये मैच काफी मजेदार होने वाला है। MR मजा आएगा इस मैच में। Team Godfather, and you can see that it is LIB अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हार्लिंग MLB है, हार्लिंग ML अभी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। टीम Ace Invoker, okay, that's a good team. Ace Invoker बनाम Velocity Esports, Doom Walkers बनाम The Godfathers, Morian Royals और Team Mavericks का पहले दिन में ही मैच। Oh my God! QE Nebula versus Ghouls, QE Zenith versus Mavericks Esports, Star Boys versus Voidlight, LED Esports versus Lost Sureales और आखिरी में ARX Esports versus Team Arling ML। QE Nova ने रजिस्टर नहीं किया है sadly, बट QE की दोनों फ्रेंचाइजी खेल रही है, तो डेफिनेटली वो मजा आएगा देखने के लिए। दिस इज द मैचअप्स गाइस। इसके बाद पता चल जाएगा हमें क्वार्टर फाइनल्स में कौन सी टीम खेलेगी, फिर सेमीफाइनल में कौन सी टीम खेलेगी, एंड देन इन द एंड द ग्रैंड फिनाले, हु विल रीच आउट टू द ग्रैंड फिनाले। कमाल का ये मैच होने वाला है, कमाल के सेटअप यहाँ पे लगने वाले हैं, और उसके लिए भी आप सभी रेडी हो जाइए, क्योंकि क्लैश ऑफ स्टारलाइट यहाँ पे जो वो होता हुआ हमें दिखेगा। इन टीम्स के बीच में लगातार जो है क्लैशेस होते हुए जाएंगे, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। सेकंड चांसेस यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सीधा नॉकआउट राउंड जो है पूरे रहने वाले। ग्रैंड फिनाले तक कौन सी टीम अपना सफर करती हुई जाएगी, यहाँ पे स्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। एसटीजी एक गलती और आप सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा प्रेशर रहने वाला है टीम्स के ऊपर। बहुत ज्यादा। पर इसी के साथ गाइस इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि रिवील हो चुका है ब्रैकेट, लेकिन अभी भी एक मैच बाकी है आज का। तैयार हो जाइए गाइस, आज का दिन खत्म नहीं हुआ है। वी आर येट टू कम फॉरवर्ड फॉर द लास्ट मैच ऑफ द नाइट। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बिकॉज न्यू सेट ऑफ कास्टर्स आर गोइंग टू जॉइन इन सून एट Algambo Esports, एंड इफ यू वांट टू बी देयर फॉर दिस क्लास ऑफ स्टारलाइट जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा Algambo Esports को। लाइक द स्ट्रीम, शेयर द स्ट्रीम एंड कमेंट डाउन whom you're supporting for the class of starlight and whom you think gonna take on the champion title for class of starlight. Thank you.
A very late evening to every single of you, and with that, we are back again at bringing you the third series of the day. This is MOBA Warmup class series, back again with another interesting one. Let's see who's going to be our teams. Before that, I'm your caster PT, and I will be joined by Ray. So, hello Ray, how are you doing? Well, the season is filled with viral fever, so watch out, folks. Stay hydrated and make sure you treat it like COVID. Keep your distance. Jokes aside, of course, doing a little bit better now, and I'll feel even better to see how ARX Esports does against Team Mavericks. ARX has been except for I feel 2-3 members, they have swapped out their lineup. We've had Prajwal enter, their team, and they have struggled quite a bit because they are yet to find the synergy. But now I'm looking forward to what they can bring. It's been almost, I believe, 2 weeks of them with this new lineup, and I'm looking forward to how the draft is going to be. First game already, Hirara, the new Kaja, along with the Atlas band out that just leaves out the Belleric. Still waters run deep. We would be seeing a Belleric under the first match as well, but again, ladies and gentlemen, to remind you, this is going to be a best of 3 series. There's not going to be any winner. Teams taking and seeing mistakes. So let's cheer them on and let's see what is it going to be fantastic. But I do want to see the Marshall rise up as well, because hey, there is a lot of heroes who are ban worthy nowadays. A lot of heroes, actually. In a way, this meta is probably the most open meta, I would say, considering what heroes used to be deemed as very low tier or dark system tier, right? For example, the Sun, the Eudora, the Gord, the Hanabi, all of them have now stepped into the meta, and because of that, this season MSC, we only had 50 heroes that were completely untouched. Around 70 heroes were completely used or banned, so it's a good sign, because usually we only have 30 heroes used and then 100 heroes not used. So the meta is very, what do you say, open to every option. I mean, we even have Bharat CXP lane being a thing now, which only used to be into the jungle strictly, and that too during only the tank meta. But now Bharat has found his place on the EXP side, but that obviously leaves out the carry. And with that, right now we move on to the second phase of the banning. And considering that there's no gold laner for the side of Mavericks, they should, okay, they're actually prioritizing jungler. ARX does not want Mr. Consistent to get his hero pool. And is that a wrong ban or a glitch? Because why would they be ban a Melissa after there's a carry? I hope it's a glitch. Or else... my friend. What? It's not glitch. Confirmed by a production side, of course. And why? Did they forget carry is a marksman? I mean, I guess so. Because that is a ban wasted completely. And in a way, it helps ARX Esports because now they have one less marksman to worry about. ARX will go for the Gatot Kacha. What's your command? Their composition feels a bit weird because all of them are having heroes that are very good solo, but team fight wise, I don't see any synergy from the side of ARX Esports. Mavericks, on the other hand, they get Mr. Consistent as Fanny. There we go, the Granger as well. Popping up. Granger, early game, much better compared to, of course, the carry. PT, are you back with us? Yes, I am. Sorry for the technical issue, but hey, ARX Esports commits to an export. You were just talking about, around 70 heroes being untouched, but hey, ARX Esports wants to give a try to every single hero, right? Yeah. This is kind of new though, picking up an Xbox. So let's see how it works out. And teams like this, the players like this, picking up these kind of heroes and giving us the scenario also helps us in a way as well. So I am kind of curious to see how it's gonna work out.
Now again, Belleric, yep, I was expecting it, but Fanny, this match is gonna get interesting. I think, last time we saw, but yeah, first of all, we are into the game, ladies and gentlemen. But yeah, for last time we saw, Mr. Consistent was against VLG, right? And the Fanny was almost close to winning, but VLG ultimately won that game out. And over here, oh wow, that's a lot of purifies. Prajwal with the Xbox EXP. I mean, it's decent against the Barats, considering it's a high HP hero. That's true. That's true. It could work out very well in that kind of a scenario, but at the same time, you possibly will be needing a bit of a Sky Piercer stacks as well. Mr. Consistent will be on the same route with the Sky Piercer, so I do believe is the fastest reaction time needing right here because Fanny would be a tad fast given the fact that she is an assassin. I agree with you on that, Peachy. And one more thing is, between the Ling and the Fanny has better scaling from the early to mid game. I guess you can even say in the late game in the side of burst. But as soon as the late game comes in, Ling is better for the simple reason he has immunity. And another thing he has is the fact that he's a crit scaling assassin. He can basic attack even when he's out of energy. Fanny cannot. And that puts him at a slight bit of edge over the other one. Now Cursed Soul has gotten the rapid boots, will help him rotate. Okay, no first blood coming in, but at the same time, there's going to be a lot of pressure happening. So let's see if we are able to see it or not. And Ray, did you notice G-Razy is no more onto the gold lane? And he has also shifted to the EXP. So the team Mavericks are really coming in, trying to give every lane a try as well. That's really looking good. But the turtle, Mr. Consistent, being very fast enough. Or taunted, and he doesn't look quite good. That will be the one taking away the turtle. Once again, it's going to be the Fanny falling down. Wait a minute, Fly, he's trying to get out of the way, but that's duck for you. Taking another kill. Belleric so low, but the teams won't be jumping in. I mean, it makes sense. G-Razy sometimes plays gold, sometimes EXP. He's basically trying both side lanes. But Fanny starting a turtle is never a good decision. I'm not sure why he made that mistake. Fanny is someone who just secures the turtle. And now, that's going to be 2 kills for the side of ARX with a turtle on their board. So they're pretty much... the early game is really good for them. Okay, we got a Kacha looking already quite low already once again. But hey, ARX Esports onto a lead. Let's look forward to what they are going to do. And talking about itemization so far... very well. Like they are on a good path, especially for ARX Esports, who are picking out the expensive stuff very quickly. Oh, nice attempt coming in from Def, but he was tad slow right there. I think Ling is building up towards the Berserkers, but he still has that Vampire Mallet just to make sure he gets a bit of regen while farming. It's necessary, I get it. But anyways, moving on right now. Bot side is going to be the main crucial thing, considering right now Carry and the Granger. Oh, Consistent gets a kill on the top side along with Barats. Okay, this is looking good. AOG, top center, none this time around. The taunt does get taunted on to Belleric. He's looking quite low, won't be getting alive. Weekly picks up a kill. Zedian not in a good position. Tempest of Blade onto her, and she will be taken down. Coconut Water onto the other hand. I do remember yesterday I was, having Team Mavericks onto my hands as well. Coconut Water had a very good run with a Claude. He's on a Granger this time around, so I am
kind of curious to see what they are going to do, given the fact that he doesn't have any kind of an early game presence as of now. But with that is going to be Cursol trying to go onto the backline. Duck once again with the retribution gets it on. Mr. Consistent will have to go behind, but Shreyas still looking quite healthy, trying to make sure his team will be having that Cursol for the double kill. He's trying to go in for more, but no, will be taken down by the lane. Coconut Water this time around is going to be taken down as well. That's going to be the carry for you, who found out the right spot, and carry already switching out. They need to really pay attention to the carry, because now Wiki has gotten 2 kills and 3 assists. That's a lot of gold. And assist is a very core part I believe a lot of people tend to forget, because, you know, I mean, it is not something we pay attention to daily, right? So yeah. I think they really need to pay attention onto the carry as well. But moving on right now, we are taking a look into, of course, the mid side. Okay, this is just a bit of a teaser, while Coconut Water will have to battle it out against the Xborg, which would be a little bit easy unless he just lets, you know, the Xborg poke him, which Prajwal is not playing it very aggressively. So far for him, he's hesitating a bit. But again, poke from both the sides, no joke. So I do feel like they won't be playing it out aggressively. But at the same time, you will be looking a bit of a coming in, you know, fight coming in, I feel like, yeah, because Duck truly annoying with that. Yeah, I agree with you on that, Peachy. And now, top side, they're trying to put the pressure on, but Wiki is still 0 deaths, and he's going to be the main threat. Mid side, Zaytian unfortunately won't be able to defend that, and that's going to be a tier 2 down, tier 1 down. Top side, Prajwal. Oh, he will be taken down. But wait a minute, Duck is still right there. He does get stunned up because of the Zaytian's faster right there. Shreya's taunting every single member right here. Fly thus gets the, you know, targeted by the Ling. Taken down. Ling for the mega kill. Look at him, but he's first. That comes in around the 6th minute of the game, closing down to 7, and Mavericks finally found the last turtle onto their hands. Mavericks slowly are scaling up, and I believe ARX Esports needs to watch out for that. But at the same time, the fact that their marksman is still doing really healthy, I guess they're not that bothered by it. They're like, yeah, we can handle. Wiki is pretty much farmed up, and he's not really bothered much by it. And now moving on, bottom side. I think they want to pressure actually mid. Okay. Possibly. I mean, mid at this point of the game might be little impossible in my opinion, because there's going to be a lot of members who are still into the river area, and that's not going to give you the chance to open it up. But rather, I think Weekly might be the one trying to go, or Fanny. Look at that, Fanny. Definitely. How did I forget a hero who's very good at split pushing? But let's not forget Duck is also onto a same note with the Fanny. Look at that. Notices that, you know, mid lane the fight might be breaking up. A bit of a turn onto Prajwali. They are trying to get his Firaga armor down. That is actually a one way to get a good counter onto an Xborg. I mean, after all, they need to shut it down to make sure Prajwal is disabled in the XP side. And once that happens, Barats will have free reign. To be fair, considering they have a Barats, he can just eat he can just eat them up, honestly, and not worry much about anything. So, moving on right now. What can they do? I believe that bot turret is a goner. Fanny, she won't be there in time. They are really focused on trying to get the mid lane. Mid lane, let's see. Now again, Weekly as well as Prajwal, and they have been very active on pushing the towers, which is a good thing, because towers plus the base getting down will be giving you the chance to win the match as well. So
Hey, they are wanting to get that onto their hands. Lord has been spawned. This is going to be a very crucial moment for both of the sides, especially for ARX Esports, because they have been losing their lead a bit though they are having the goal onto their hands. But just 100 difference. Look at that. Team Mavericks will surpass them if this continues, and the game would be going into the hands of Mavericks. So ARX Esports doing so well. Why would you give up the lead? Lord is spawned in right now. Jushin has a Sky Piercer. She completed the Clock of Destiny. And okay, Xborg with a Antique? I mean, I get it, there's a Fanny, Granger, and Barak's all skill damage, but like, Xborg needs the Immortality. I feel like that's kind of a bad itemization, because with Immortality, you can, you will survive. Yeah, you can play it aggressively. You can't, you have like a 3 lifeline because of that, not just that normal 2, the Faraga armor and your plus your normal. But oh my goodness, Tuck taken down in a 1v1 situation. So we finally get to know who is the superior jungler of this match as of now. But with that, Team Mavericks will have to start up the Lord. They got the green signal, and there you go, Ray. And with that, considering... Oh, Prajwal. Oh, Yoji drops in. Retribution onto the ass of Mr. Consistent. He takes it away. Coconut water positioning himself so well. Prajwal, he doesn't have a spiral armor. That means no ultimate onto him. Curse Soul trying to get away, but Weekly very aggressive right there, given the fact that they were the ones losing the Lord and not winning. That was impressive retry, by the way, because like everybody just thinks retry versus retry is the main thing, but oh, Prajwal! Solo, Mr. Godzilla will he be able to do that? Oh, yep, he won't be able to do that, but that's going to be the Coconut Water finding his first kill of this match. Crazy enough, Prajwal will live to see another day. But yeah, like getting back to the point, and that was really good retribution, considering like there was like 3 ultimates on the Lord, and it was so crowded. I honestly thought she's gonna miss it, but Consistent was able to get it. Really good retribution on display right here. And now mid side, it's getting pressured. Mavericks have found their lead, but Consistent, what's happening? Okay. Doug this time around feels a bit confident enough, given the fact that Mr. Consistent was taken on too low, and mobility-wise, Fanny wins. The Lord's been taken care of, and with that, Team Mavericks do find themselves quite a few turrets. Now that's a good thing. And this is what I was talking about Tempest of Blade comes in. There's going to be a bit of a stun. Along with that, Duck would be the first one to fall down. Coconut Water shooting bullets as if it's never ending. G-Razy jumps into the team fight. They get a green signal because G-Razy is acting like a secondary tank right there. But Team ARX Esports, they have a shit ton of minions to take care of. Yeah, they do. 8-9 score, and we are heading towards 13 minutes into the game, and the Lord is coming up in 1 minute. It feels like Mavericks pretty much have the game in their bag. Wiki has been on 203 since like 5 minutes. He's not gaining any kills, he's not dying, but yeah, he needs to step up right now because he's the only hope of taking down G-Razy and Curse Soul, their frontliners. And after that, maybe the Link can take care of the Zatian and the Granger. Destroy OG dropping in. That's going to be Prajwal with his ultimate Coconut Water. Thus gets a very good way, but there you go. Zatian, her ultimate so well right there. That Weekly will be the first one falling down along with Prajwal. Zatian does manage to get a kill. Sureales, there's no exit path for him, and Zatian looking quite low. Mr. Consistent will be the first one right there to jump and take it away, and Team Mavericks find themselves maybe winning it up because Duck is all alone right now. There's like more than 10-15 seconds of the teams coming in. Duck really taken on quite too low. He tried to get the minions in, taking out the minions, but no, the minions are in, and Team Mavericks find themselves the first game of the series. Pretty good comeback, by the way. ARX actually had the early game in their bag, and now we get the highlights. Peachy, carry on. Let's see. This is like the very last team fight that really set a tone
for the Team Mavericks. Now again, taking away micro doses of comeback, especially for Team Mavericks, right there was a way to win. They did not bother with the early game. For me, the early game is definitely important, but the good thing about early game, you have to keep the lead. You have to make sure that the lead is staying on the mid game to the late game, because Team Mavericks did a wonderful job during the mid to the late game. This is where you got to see how they were the ones taking the lead for this match and winning as well. So this is really big for Mavericks, because they have definitely cracked the code. I think. Sorry, who was it again? Team. No. Like the Ling. I mean, Duck. yeah, the Ling. I think he made a few mistakes for sure. After like gaining the upper hand in the early game, he should have played a little bit either more aggressive or a little bit more safe. Because like, and Wiki also was after gaining 2 kills and 3. I feel like he played too passive. I feel like ARX, they lost their aggression after gaining the momentum, and I'm not too sure why, considering, I mean, to be fair, one thing is for sure, they did not have any crowd control for the Fanny. That is, I guess, one of the things that definitely affected them. True though. So let's see if the team does get the game, because reverse sweep is always an option for this team. So let's see if that happens or not. But second game, really curious to see, because Fanny, I have seen Mr. Consistent picking up, interesting heroes. Just yesterday, if I'm not mistaken, it was a Hanzo, and I do want to see a Hanzo game again, because it is one of the heroes that has been coming into a meta for just like a few days and is already out of meta. So I do want to see at least a player making it play at least a win on the hands, or something like an Hellcut also, but I don't think the possibility of an Hellcut today is there. I think it is also a reason. I'm a Hanzo fanatic, by the way. I really like playing Hanzo because he's one of the heroes that stops me from getting invaded in solo queue. People say like, oh, you can't play Fanny or Ling. Yeah, try playing that in solo and not getting your buff invaded. Hanzo is favorite because of it. You don't even need jungle emblem. Just take your buffs and just farm peacefully. And usually, I mean, not peacefully, they will still bother you, but at least you get your buff, And I really like the fact that he is, even if you build him full tank, he has really good damage on his first skill. And I think that is something not a lot of teams are ready to use, for a simple reason, is that Hanzo is an assassin that keeps on going back and forth, He's not like if you see a Nolan going in, yeah, he's gonna go in. Hanzo either will decide to either poke or go in, or if his soul energy runs out, he will come back. You cannot basically rely on him. He can retreat anytime, but you cannot. So I feel like that's one of the reasons why many teams don't like playing with the Hanzo. That's true. So let's see if Mr. Consistent does picks it up onto the second match or not. But at the same time, second match will be soon, ladies and gentlemen. And also don't forget, if you and your team want to play right here at the Algambo Esports for the scrims, the notification will be up in the Discord, and you need to be really quick, because there are a lot of teams who are gearing up for a lot of tournaments, and they are practicing every single day. You see all of these names coming in for every single day, and only 6 teams can play per day. So good luck with that. And with that, let's start with the second match of the day, Ray. Yeah, ARX now gets the first pick. What is it going to be? And I'm really looking forward to if ARX Esports will show up with any pocket picks, considering they are in our Clash for Starlight tournament right now, and as well as Mavericks. They should definitely be practicing, because it's going to be a short tournament, not a very long one, but the winner team, all of them gets the Starlight for free. I mean, not free, they will have to fight for it, but you get the point, right? So yeah. Yeah. Sir, what's now your command? let's go into the bans.
ARX does not want the Fanny. Makes sense. Let's see. Fanny out of the way, respect band coming in, Kaja as well. I do want to see the revamp Kaja though. Maybe tomorrow I will get lucky about that, but today no luck. Or maybe the third match. Let's see if that happens or not. Team Mavericks most likely would go for a Belleric or an Atlas, but there you go. It's gonna be a Melissa. That is interesting. That was so early on. They banned Melissa last game also. After enemy had, like, opponent had carry. They really dislike Melissa. Okay, I mean, understandable. One of the scaling heroes, and on top of that, the damage potential is just quite high. But I feel like she does have a lot of cons. So, on the other hand, Team Mavericks are just taking the safe spot right here. It is who we are. What if just the theory? Okay, because last game the opponent had a carry, right? What if, like, their marksman coconut water, he wants to play Melissa, but they're like, no, we'll just ban it. Oh, could be. But hey, I kind of have a feeling like Hirara being picked up, and there you go. It's going to be an Hirara coming in. ARX Esports are going to work out a bit onto their hands, but Team Mavericks have a chance to pick up the Belleric onto their hands. ARX Esports really need the Belleric right now because I feel like it could be very well with the Hirara. Hirara is... It is hilarious. She has risen to the ranks. Low-key, I feel like she does have a hidden buff. Or it's just the fact that, tank jungle is not the meta anymore. I'm not too sure, but hey, I could just be theorizing. But anyways, with this, we get the obvious along with... We'll finish off what was left undone. Okay. Very tanky lineup for ARX Esports, actually. Ooh, like it, but they gave up the Belleric. That is still a bit, even if they ARX Esports go for the Belleric first pick, they would have to eventually give out the Hirara onto the hands of Mr. Consistent, so it was still a no-no. But having a Hirara right there, so let's see how it works out. Really needs the early game. Like, minute 1 first blood is definitely needed, but Team Mavericks having a bit of a range under their hands with a Farsa. I am vengeance incarnate. I also think if you're gonna play Hirara, your best girlfriend is going to be Selena, because both of you basically get your power spike at level 2. So Selena just needs to clear 1 wave and you just need to clear 1 green creep, and once you're level 2 you can immediately invade the purple, because most of the junglers are also taking the green, right? People don't start at purple or red anymore. They start at green to get the level 2 fast. So you can invade the purple. If they come in, your level 2 power spike is going to be better than most level 2 power spike. So you will win it. And if they don't come, you walk away with a free purple. So yeah, I think that is something that Hirara players should be doing if you have a Selena duo. But I mean, look at that, because if you look at the Belleric, right, he's most likely going to get first skill. After that, he doesn't have anything, right? Then Farsa, let's be real, Farsa before level 4, she doesn't have enough damage. She does have the first skill though. Her first skill dishes out a lot of damage in the early game. That is true. True, but range is something it will be limited to her unless she hits level 4. So let's see how is it going to be. ARX Esports choosing a bit of a long range mage right there. Not a long, compared to Farsa, but at the same time, it is just enough to clear out the minions very quickly. Now with a Minotaur as well as a Belleric, they would be having a bit of a rotation, especially for the Zatian and the Minotaur, because they have to get Hirara kills anyhow. Team Mavericks choosing to go for a YSS, and for a Yi Sanshin needing to outfarm your enemies. That's going to be a real challenge for Mr. Consistent. Okay, they go with the Zatian. The euphony of suffering. And they wrap it up with a Granger. I don't like the Granger pick, honestly. Unless the Granger snowballs, he won't be able to
take down the Beleric, who's basically the most tankiest hero in the game right now. True. That is true, but the Team Mavericks go in for something interesting right here. 5 seconds. They don't wanna go for a pure marksman, while Coconut Water goes in for a Guinevere. And plus, they have switched up their EXP laners. That's going to be an interesting game to see. And with that, ladies and gentlemen, let's dive into the land of dawn, because both the teams are ready, the players are ready, and they are right here to rock and roll. With that, maybe lethal first blood. What about you, Ray? What do you think? I think it won't be possible because like both of their mid laners and like the tanks don't have it before the level 4. But considering kridox is coming, it might be possible. That's like Phobius cannot dish out enough damage in the early game. So yeah, you might be right. Let's see. Passive gone for Zatian. That's true. She has already taken down quite too low, but has the ability to heal himself and his allies, so they are playing it safe. Now, Vice is a bit at slow, trying to sweep up everything possible. Understandable, just the early game, but ARX Esports are not choosing to go for the lethal. That is really new. I was not expecting it. On top of that, Team ARX Esports are playing it very passively. Yeah, with the Hirara, I would expect a little bit aggression, but I guess she wants to like be equal to YSS, I guess. Like, doesn't want to lose the farm because, yeah, playing aggressive, if it backfires, you can lose your farm technically. And right now, Duck still, regardless, gonna be able to get his jungle. Minotaur, that's a first blood. Oh, a little after the lethal. Was not expecting that, but hey, the wrong way to come in for a Minotaur as well. Even though he does have the heal, but that was just not the path for it. Well, let's see what the teams are going to look at, because Turtle is up and we might be able to see more blood. Oh, before that, Shreyas already low. No level 4 for him, and Mr. Consistent picks it up. Duck, on the other hand, goes in for the fly, which is really interesting to see, because attacking our own bird kind is an offense, sir. So wait a minute, there's going to be Mr. Consistent with the turtle. Yep. And the turtle is going to be secured. No issues. Mavericks gets it. Even the purple right now getting blasted. Phobius bursted. Okay. Mr. Consistent still wants to get that kill, but evading it up. Team Mavericks, this is literally the deja vu from game number 1. But this time Mavericks basically have the lead into the game. Disabling Hirara Snowball, even though she's... Okay, go for a pause. And let's see, most likely they're lagging. Could be lag. It was Prajwal who asked for it. Oh, nice. Okay. Nice animation, right? Yeah, that really looks cool. Hey, move it back. It looks better there. Hide the timer. Okay, this is also another option that is good. Let's see what the teams will try to do, because Team Mavericks are on a lead with 3 kills onto their hands, and this all happened into the hands of Mr. Consistent. Give YSS so much farm is really not good, Ray. I mean, YSS is the biggest farmer in the game, man. That guy farms. His farming is insane. He's the only one of the heroes that I have like been like 5 levels higher than like in my own team. So yeah, he is the epitome of farming. But and to give him 2 kills, and that to Mr. Consistent, who has been consistently really on level with Kiyoshi. And I mentioned Kiyoshi because he has been on a winning streak lately. So yeah, he is on a win streak. I believe recently they were only defeated by a team from Mumbai. I can't remember their name, but since there is obviously, what do you say, like
No reply from Prajuals and who asked for the pause. We will immediately start at the moment the clock hits that 28. Oh, because 20 minutes, 2 minutes have been done. And there we go. We go back into the game. Okay, let's see what the teams are trying to do, because once again it's going to get interesting because Mavericks are the ones trying to get it on. But wait a minute, bottom lane, something is fishy. It's just coconut water not playing it out aggressively, but Crypto has been caught right there. Pretty slow game, honestly. Mavericks are also taking a very basic... Oh, mid-side Duck is just gonna get bursted. He will not survive it. This is one of the things, with Hirata. Because, like... if you catch her off guard before she can cast her Fallen Maple skill, her immunity, well, she can't do anything. She's very squishy. In fact, I believe she's one of the very squishiest assassins in the game. Until you build a little bit defense, of course. So they are just doing that. And now they're even catching the Minotaur off guard. They're catching people with surprise and force their either spell or force them to go back to the base. You look at that, bot side too, Wiki taken down. Oh my goodness. Early game taken down. So that's not looking good. But at the same time, Team ARX Esports are yet to find their snowball. The ARX Esports have not gotten the early game. And having a Hirara no early game just is a, equalizer to a bit slow start for them. So far we are seeing the same, but Turtle, wait a minute, that's gonna be Mr. Consistent. So much damage coming in from Fly. He does get one Mr. Consistent one as well, but wait a minute, nice knockup, but it won't be beneficial since the team does not have a follow-up hero. Zaytin's more like a team fight, like providing the support in a team fight rather than being very active like Fly, like a Farsa. I think it's also because like Parsa's ultimate is just way low cooldown. She's able to be more active. Meanwhile, Zaytian really needs the fleeting time to be actually doing that. So all these things considered, of course, we get a highlight. Minotaur did try, but his engage was way too late. His members were already out, and one of them already sent back to the base. So there was just nothing they could do. What was that text? I missed. Oh. No worries. Even I did not catch it, but at the same time, Team Mavericks are not opening up anything for the side. So let's see what the teams are trying to do. The maps are going to get opened up. Cryptos, on the other hand, putting out a bit of a pressure. And now there you go. Fly pops up his feather airstrike, trying to lower them down. Everyone out of the middle lane from Team Mavericks. They're finding that window of opportunity to jump in. This is the thing right now. Krabby Patty is using up his ultimate like kind of pointlessly because there was no use using that ultimate in the mid side, right? You need to wait for the setup with the Minotaur or let Minotaur make the set after you use the ultimate. Now it's gonna be on cooldown for like 40-50 seconds, and you basically don't have anything to engage. And bot side, I don't. Oh, that was a good engage from Duck, but sadly his damage is not enough against the level 12. YSS when he's only level 9, or else that could have been a good kill for him. Okay, let's see what the teams are trying to do. Team Mavericks 9 kills onto their hands, and plus they will try to get a bit more as well. Mid lane might be opened up, but before that, Turtle will be a priority. The teams are looking forward, especially ARX Esports, because they can't go for a contest and they can only farm as of now. So let's see how it will be going around, losing all the neutral objectives such as the Turtle. 0-9 Mavericks just full snowball with no kills given. They are really utilizing the fact that they got a Paquito and just utilized him onto the XP with a Guinevere. They know that, mid side as well. Zaytian can't survive that. She's gonna be a goner. Dark forced to use Retribution in his own jungle.
they pretty much have this game in their bag, and the only way ARX wins is by the other side throwing it away. Look at mid side. Oh my goodness. Flank one and Still not one. Still not one for ARX Esports. They couldn't get the last hit onto the potato, but at the same time, mid lane gone, and Mr. Consistent jumps into the turret, really soaks up the damage, and yet is still at the 100% of his HP. Let's see. Oh, okay. There you go. There's going to be a bit of a ground view coming in from the, how upper gods look at us, that kind of a view from Hirara right there. But let's wait and watch for now, because Hirara does get spotted on. I think, Peachy, ARX Esports, their lineup was faulty in the way that, like, going for the Granger was, I told you, right? Granger can't get farm in a composition like this because Hirara needs all the farm she can get. Granger needs Skybaser, but so does Hirara. So you're basically caught in a very weird section. And that's a good ultimate from Zatian, but Minotaur cannot follow up. That's the issue. Okay. Cryptos really putting the bit of a pressure. Duck has to get out of the way. Oh no! The purple buff coming in at the wrong moment caught him off guard, and he will be taken down. Cursed Soul, on the other hand, is tanking so much, only 58%. Nice wave goes in with the flicker. Coconut water as well, but they did not find the one. Shreyas will be the one taken down. Weekly finds themselves the first kill, but he himself will be falling down, only allowing Zaytin to be alive, but not so for long because Consistent is just being so aggressive. Yeah, and Peachy now, with all these things considered, it's looking really dire. It's really looking dire for the side of team ARX. They finally do get one kill on Wiki, but that won't be enough. We get a highlight of what really happened. Duck did have absolute best. This is just bad luck, man. That's all I'll say. The wall came in the moment he was trying to retreat. That is so relatable, Duck. I've been there, man. Oh man, look at that. Even the Cursed Soul was having such a good setup. Even before that, team members were not alive as well. It looks like ARX Esports, they're all spawned in. There is a very high amount of EXP difference between the marksmen, the junglers, especially junglers, because Mr. Consistent already level 15. Look at that, Cursed Soul. Ow! Minon Fury doesn't connect there quite well, but he still jumps in, trying to give Bite a bit of a time. There's going to be Prajwal going into the back lanes, giving a bit of a stun, but he himself taken down along with Weekly. Bus gets taunted in by the Bellaric. They burst down Zatian, and Duck is the only person left to defend. What are they going to do? ARX Esports, wait a minute. Cryptos try to go in, and Duck, what is it going to be? He can clear it out, but he himself will be taken down. He buys himself so much time. The Shreyas will be coming in, and the minions is cleared down. But there are minions coming in from the top and the bottom lane, which is not looking good. I think, PG. Ooh, damn. What can they do? Their wave clear is really bad. This is also another thing. Granger is pretty bad, by the way. Wave clear. Yeah, Granger, you can only play... Granger was really working in the last season because we are in the tank jungle, And since tank jungles, they can't snowball. I mean, they can technically, but they're not an assassin kind of snowball. Granger was your best option because Granger would be the damage carry. Now we're into the meta where you need the YSS, the Lings, the Hiraras. And when you have that, marksman like Granger, who only can win when there's a snowball, just does not work. You need the Irithels. Goddamn, Mia would be better, honestly. Because late game, she is much stronger. But Granger, no snowball, nothing. This is going to be really expensive for the side of Team ARX, because if they have to give it a comeback as well, they have to give all of
their will, their sportsmanship, and everything possible right here. Let's see, Mr. Consistent taken out quite too low already, but at the same time he's just playing it a tad safe. He's just like making it sure that the team's himself won't be taken down. Proto's looking quite low as well. The base is quite open right there, not liking it. But wait a minute, Zetian will be caught down and the base taken over. This is going to be a victory for Team Mavericks, making it a clean sweep. A clean sweep indeed, PG. And it was a pretty brutal one. And it was a one-sided game, 24-1. Wow. That's a massive KDA difference. 1507. Mr. Consistent getting the MVP away. And only one kill, and that is only into the hands of Wiki. Oh, that's not good. That's not good. No, again, this is just the scrims, so the teams really do understand what to do and what not to do. And with this kind of a score as well, I'm pretty sure they got to know what are the do's and don'ts. So let's see if the teams will be able to work it out and come tomorrow playing it out well. But that's for tomorrow. But today we will have to end it up because this was just the last match of the day. But don't worry, do join our Discord for the announcements. There's going to be Clash of Starlight starting very soon. The brackets were just opened up, and I'm pretty sure you guys are excited because I am. So with this, let's see you guys tomorrow. Bye bye. Good night.